Morning, everyone. Let's start today's event. Hi, everyone. So before we kick off this amazing conversation with our panelists, let me just introduce myself. So I am Priyanka. I am the co-founder of Artha Samarth Consultancy here. We are a social impact consulting firm based out of Hyderabad, and our mission is to make a real difference in the world by partnering with CSR companies or NGOs or budding social entrepreneurs who have like amazing ideas. And we help them achieve their goals and create a meaningful change in our communities. So at Arth Samarth, apart from our consulting work, we're very passionate about tackling a lot of important pressing issues in our society. So one of the most important issue, which like one of the problem which I always felt very close to was the awareness about menstrual hygiene. So even before I had my own startup, I was advocating a lot about speaking openly about menstruation, having I promote menstrual cups or going towards the sustainable zero waste period. So I've been doing that over 4 years now, and today, I mean, I'm so excited that today we are celebrating World Menstrual Hygiene Day, which is 28th May, and taking the leverage of this platform today, we will be not only covering about the menstrual hygiene awareness, but we're also going to introduce and speak about cervical cancer awareness too. So through our dialogue, we want to raise as much awareness as possible in educating the communities through campaigns, events, and various partnerships. So on that note, I'm very pleased to welcome all of you for this event today. I am very and truly overwhelmed by the response and number of people who are joining in today. Truly, truly blessed. So let me give you a brief of this event. So today's event is all about fostering some deep understanding of the menstrual hygiene and the cervical cancer. And this year's theme, by the way, it's together for a period friendly world. So we just hello. Okay, so so we'll be discussing on the this year's theme, which is together for a period friendly world. And on this, we have like an incredible lineup of speakers who will be sharing their insights, their experiences, and help us in understanding and addressing the various challenges and the cultural barriers and the innovative solutions we can have when it comes to the menstrual hygiene and the cervical cancer. So thank you for joining us today. Your presence here shows utmost commitment. I know it's a working day and people are joining in either from their offices or, the students, a lot of students who joined in. So I really, really appreciate your presence today. So now here, we'll encourage a very open discussion. So whatever queries you have, whatever questions you want to ask, please write that down in the Q&A box, okay, which is available. So the session, I'll just tell you the flow of the session. So we have three amazing speakers. So we have, Yati Desai ma'am from Desai Foundation. Then next we have Dr. Moksha. And third, we have Dr. Jyoti Shinde from Jivika Healthcare. So once the individually, we have some understanding of Q&As with each one of the, speakers. At the end, towards the end, we'll compile all the Q&As, the questions which you have posed, during this event. And many of you have actually filled in the Google form. So we have compiled a lot of questions from there too. So we'll take a few questions at the end of the session, and we'll have all our speakers, put their comments on it, and then we'll conclude the session. So this is going to be a very, crisp session. So looking forward to have some really great conversation and knowledge through this. So now let me introduce the first speaker for today. So our first speaker today is Miss Yati Desai ma'am. She is a passionate advocate for menstrual health hygiene management, and she's conducted extensive research and development for both products and projects through various trial and errors. And she's designed a very successful, amazing program for the Desai Foundation. So we will be discussing a lot about the project, the innovation what she brings in. So let's welcome Yati Desai ma'am. Welcome, ma'am.
Thank you. Thank you, Priya. First of all, happy World Menstrual Hygiene Menstrual Day. hygiene. Same to Yeah. you, and good morning, everyone. Thank you so much, Priya, for arranging this type of event on the, especially on the Menstrual Hygiene Day, because Menstrual Hygiene Day is something very special to us also, and personally to me also. So thank you so much. You're Uh, welcome. We really appreciate your presence over here. So, without wasting much time, we'll just go into the, having conversation around this. So, so this year's theme, as you know, it's Together for a Period-Friendly World. So, can you share some of the biggest challenges you've observed regarding menstrual hygiene management in rural areas? yeah, sure. So before going to your question, I would like to share something about what do you mean by the period friendly world, right? So everybody is saying and posting and hashtag doing hashtag. Okay, this year theme is period friendly world. So we need to understand what is period friendly means, right? Period friendly means when everybody has access to the correct information, has access to the period product, whatever they want to use during their period, and also where the taboos and stigma become history. Means the world where no exist of any stigma and any taboo. So on this menstrual day, we are dreaming for the period friendly world for the future generation, right? So for that, we all has to work together. And we all know, not only we at the Desai Foundation, but you and everybody who are working in the menstrual health and hygiene space, they know that okay, what are the different type of challenges are already there in the community when we are working on the menstrual equity, right? So as you rightly asked, what challenges we have faced. So, as you know, Desai Foundation is working in the 8 states of India, and every community has a different cultural stigmas with respect to the menstrual health and hygiene. So, we face different type of challenges to while creating awareness, while creating a better space for the girls in the school, everywhere, right? So major, if I conclude all the challenges, it come to the if I conclude all the challenges in the one line, it is the taboos and stigma is the most foremost challenges we are facing while working on the ground. Second, the access and the affordability of the menstrual product, and the gender inequality, and because of it the menstruation is people look at the menstruation is the woman issue, but it is not, it's a public general public issue. So Absolutely. everybody needs awareness on it, every gender needs awareness on it and information around it, then and then only we can dream of the period friendly world. So these are the basic challenges, so we need to focus on the awareness and Mm-hmm. access. That's absolutely rightly, you've put up because last year when I conducted a similar event here in Hyderabad, um, I was amazed by the turnout, by the way. I thought, there'll be a lot of women will join in, but there were a lot of men who actually joined. And Good. till then, I mean, we were surprised and they were very open about it and they were asking so many questions. They were like, you know what, like at our homes, I think it's still like a taboo. And so neither our wives discuss or neither our daughters or, they don't discuss much. But like we really want to know because we really want to feel, have that empathy towards our daughters, Menstruation, our yes. granddaughters, which is a very great sign, and I think voluntarily a lot of men are still they are very curious to know about this. So yeah, and it is, and as you rightly put, we have to include men also in Influence. this thing, and it's just not a women's subject, it's a public health subject. So That, that's really rightly put up, ma'am. So again, moving to our next question, like what cultural and social barriers do you think like were mostly effective, significantly impacting the menstrual hygiene practices in our rural India? so again here the myth with
goes on the top, because if I share with the example, if I talk about the western part of India, in the western part, people believe that women cannot take bath during the menstruation, and on third or fourth date they should wash your hair. Like Right. in contradictory, if we go on the eastern part in the Odisha or other state, so there they believe that woman has to take bath whenever they get their period. Means on the as soon as they get the period, she has to wash and take a bath from head to toe. So you can see the how contradictory the myth is, है ना? Region to region. So here it come with directly impact the hygiene practice what woman has to follow during, and it is important to follow during the periods, right? So here also we have to break that myth. Again, to break that myth, we have to focus on the education and the delivering of the right information to the community. Again, because of the gender inequality and patriarchic what we follow all over the India, again, women and girls' need is given a second priority. So whenever they need any money for buy a period product, so the priority is not given to it, right? So that also lead to the unhygienic practice, and that is why they has to restore the old practices, the using of the what clothes, whatever available at the home. So so again, this is the second issue we have to tackle to improve the hygiene indirectly, right? And the awareness is the most and important, that we have to create the right awareness. Whatever the product you are using it, you should know. Being a menstruator, you should have that information, how to use, how at what frequency you should change, how to dispose it, and then you can maintain your period with hygienic. So absolutely. I think those are very rightly put down points, which I think as women we tend to take it for granted. I think when it comes to the urban areas, we assume that ये तो पता ही होगा, this is kind of assumed that you know. But a lot of guidance is still required at the rural level. And again, I wouldn't just say rural, but I think the kids, they're just growing up and they need someone to rightly and truly guide you in that proper way and make them acceptable. I mean, accept this fact that this is quite common as like any other thing in your life. So it's not something which is very over the board, and you have to get scared about something. So yeah, and as you know that many reports suggest that many report has and many survey has concluded that in India only 7 if I talk about 10 girls, 7 girls don't know about period before that manner, right? So because of so you can see the inequality and lack of information. So they don't know about the period. So how they can handle it hygienically? Absolutely. So it's high time we have to, means together we can solve this issue. Every stakeholder has to work together for the same goal. Every aspects we have to touch, and then only we can reach to from our you goal, I think right? I do understand the importance which you're putting out on the community as a whole should be completely aware, and it's just not the women, maybe it's including both the genders and making this as a very common and a public subject. So again, as you know, I read about your initiative, which is very very interesting, and that's the reason I think one of the reasons why I reached out to you was that how you're actually involving this local communities and stakeholders in your initiatives, and how you're actually achieving that target of creating more and more awareness in the menstrual hygiene. So if you could introduce, if you could just elaborate more about the model which you developed and what difference it's actually bringing into the people's lives, right? And completely the awareness. Okay, so Asani by Women for Women is the flagship menstrual equity program of the Desai Foundation Trust, and that we are running since 1 decade. And so it's a comprehensive menstrual equity program where we try to tackle all the issue under the one umbrella of the Asani project.
So we do awareness and education. We tackle issue related to the access and affordability. We try to dispel all the myths and taboos and stigma. And our distribution model try to break all the barriers of related to the approach to the menstrual product, right? So ultimately, we are trying to tackle all the issue under the one umbrella of the Asani project. This is, and what sets our program apart is our approaches. Approach to awareness, approach to the distribution of the sanitary napkin, approach of quality of the user-friendly product, right? So these are the different approaches we are taking towards creating the safe society for the period, all the menstruator, right? So our model is we produce sanitary napkin. Sorry, I am audible? Okay. Yeah, Okay. you're audible. Okay. So we produce sanitary napkin by involving women from the community. And not only that, the distribution of the sanitary napkin is done by the woman only. So basically, by joining Asani program, women are taking control of their health and their livelihood, because by distributing each and every packet, they are gaining some commission, right? So not only they are creating awareness for themselves, they are also creating, and they are the change maker of their own village. And at the same time, they are increasing the accessibility of this disposable sanitary napkin at their village area. So this distribution model break all the barriers. The barriers to the access. Our sanitary napkin are less costly than the marketed product, available product. So affordability issue we are solving here. Again, the product exchange happen between the menstruator and the menstruator, because the seller is also a menstruator and the buyer is also a menstruator. The same that is associated while the purchasing from the male shopkeeper. We have seen that a woman cannot buy a suitable product because she feels shy to ask the different sizes of the pad or from the male shopkeeper. So these things are eliminated in our model, because here the seller and the buyer both are women. Other thing, the same lady will create the micro level awareness. I just have a small request. So there are a lot of people who are joining in who and are very comfortable with Hindi, it seems. So you explained in English pretty good. Now, if you can also, explain a couple of, in short in Hindi, it'll be very, very helpful. Okay. Just the Asani model, what you said. Okay. So basically, जो हमारा मॉडल है, तो उसमें हमारे अप्रोचेस डिफरेंट है, और वो डिफरेंट अप्रोचेस आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं वो लेडी को हम लोग संगिनी बोलते हैं. तो संगिनी आर द माइक्रो एजुकेटर, जो अपने गांव में मेंस्ट्रुएशन के बारे में अवेयरनेस भी करती है, और साथ ही में जो सारे बैरियर है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है इसलिए हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, या फिर अवेलेबल है लेकिन मेल शॉपकीपर से लेने में हमें शर्म आ रही है इसलिए हम लोग नहीं लेते, और महंगे पड़ रहे हैं इसलिए अफोर्डेबल नहीं है. तो ये सारे जो बैरियर है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में ब्रेक होते हैं, और इसीलिए इजीली लोग परचेस कर रहे हैं, और जो कन्वर्ट हो रहा है, जो चेंज हम लोग देखना चाह रहे हैं कि हाइजीन प्रैक्टिस की तरफ रिस्टोर हो, तो दैट इज हैपनिंग. If I talk about our awareness model, so we are doing awareness in the school as well as in the community. And also we involve both gender. Means we are targeting male, female together. We are also focusing on the male separately and female separately. So that approach is helping them and helping them by creating a space environment to discuss it openly, because when the thing is, the information is passed all together in presence of all gender, right? So they feel कि now अभी सबको पता है तो we can discuss, है ना? I think वो comfortable हो जाते हैं कि comfortable होता है. सबके सामने बात करो तो then it's a common topic. Comfortable होता है कि ओके ये कॉमन है, अभी सबको पता है, इसमें शर्माने वाली बात नहीं, छुपाने वाली बात नहीं. तो हम लोग क्या करते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स को दोनों को साथ में और सेपरेट भी
सेशंस लेते हैं as per the situation. Then again in community we target all the generation of the woman altogether. Means वैसी लड़कियां भी है जो पीरियड में नहीं हो रही है, कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग गर्ल्स भी है, न्यूली मैरिड भी है, और जो पेरीमेनोपॉज में है वैसी वाली महिलाएं भी है. तो ऑल टुगेदर वी टारगेट देम. तो भी क्या होता है कि हाँ वो लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो जो नई लड़कियां हैं तो उनको भी आइडिया आता है कि these are the things they have missed in their life, but these are the important things we should keep in our mind to keep our health in a better condition, right? तो वो भी एक स्पेस क्रिएट होता है कि इंटरचेंज करे, जो भी कोई भी दिक्कत आए और जो भी इंफॉर्मेशन लैकिंग हो रहा है तो वो एक्सचेंज करे. कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, व्हाट आर द इरेगुलर पीरियड, व्हाट आर द रेगुलर पीरियड, बेसिक साइकिल क्या होना चाहिए, कितने दिन तक पीरियड आए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग बताते हैं. तो दैट इज द यूनिक अप्रोच. Again, we believe in the holistic, taking a holistic approach. So we are not just creating awareness, we are also giving, after awareness, if they want to buy hygiene product and if it is not available, again the cycle will break, right? So we are not only just creating awareness, we are also providing access to it at the affordable price, at their local area, at the doorstep, right? So they will gain. We are also involving other stakeholders like schools, local gram panchayat, the local CBOs, right? To join hands to us with us, right? So that's a great model. Ultimately, yes, ultimately we are focusing to create a healthy society where everybody is open to discuss the issues around the menstruation. Everybody has information. Everybody has access to the product. And the same awareness मॉडल के थ्रू आप हर चीज मैंने आप सब चीजों को आप एड्रेस कर रहे हो कि अगर फर्स्ट अवेयरनेस, तो अवेयरनेस में आप बच्चों से लेके बड़े तक, मैंने जो भी वुमेन लाइक हु आर इन्वॉल्व सबको ही आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, बॉयज को भी अवेयरनेस आप क्रिएट कर रहे हो, एंड ऑल्सो यू नो लाइक इंडिविजुअली आप सेशंस ले रहे हो एंड देन कंबाइन करके भी सेशंस ले रहे हो ताकि दे फील वेरी कंफर्टेबल. एंड देन इफ नाउ वंस एक बार उनको अवेयरनेस मिल जाए एंड देन नाउ अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो अब अगर वो अनकंफर्टेबल रहेंगे कि नॉर्मल शॉप्स में जाके किसी से किसी से प्रोडक्ट लेने से अगर वो हिचकिचा रही होंगी, तो उसको आप एड्रेस करते हुए आपने एक ऐसा मैंने एंटरप्रेन्योरियल मॉडल ही बना दिया जहाँ पे आप विमेन को आप एक लाइवलीहुड भी दे रहे हो कि वो लोग खुद से ही उस यूनिट को रन करके दे कैन मेक द प्रोडक्ट्स भी बना सके, एंड देन फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भी फिर यही विमेन आगे वापस से कम्युनिटी में ही आपको जाके लाइक she is creating that I think a very comfortable situation ताकि प्रोडक्ट्स भी आपको एक्सेसिबल है, आप बात करने के लिए भी आप बहुत फ्रीली आप बात कर सकते हो. So that's a very I think you are truly reaching the together for a period friendly world already here. Correct, so correct. Period friendly India तो आप at least you are you're making it. So I'm very very happy to hear this model, ma'am, and also I think all the people who've joined, I have, understood, Yati ma'am and Desai Foundation is just not addressing one part of the solution, but, holistically, हर चीज ये लोग address करने की कोशिश कर रहे हैं. Thank you so much, ma'am. It was such an insightful discussion. Would like to hear some few words from you regarding the theme for this, this year. What, according to you, like, have we like truly are in the pathway of achieving the together for a period friendly world, or if like in a scale to 0 to 100, where do you place, I mean, India को अभी आप currently आपके experience के हिसाब से क्या वो truly वो period friendly world या period friendly India बना है, या कितना तक बना आपको, और कितना time लगेगा कि आपको to maybe to achieve that goal, to make it as a period friendly India? What is the goal which you feel कि that शायद 2030 2040, I don't know, just आपके हिसाब से आप बताइएगा. करेक्ट. सो जैसे मैंने आपको बताया कि पीरियड फ्रेंडली का मतलब भी क्या है, कि मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सेस मिल गया या इंफॉर्मेशन मिल गई, तो वी हैव टू वर्क ऑन द एवरी एरिया टुगेदर, then and then only we can achieve that state. Yes, if I compare today's condition to the 10 years before, we are very much
come forward because Great. so many NGOs, so many CSR are investing. Even the government is taking step further, right? They are making policies for the so the condition is far better than the 10 years before, but still miles to go because the we have different challenges. Like as I said, community to community, the myths are different. The geographical challenges are there. The mindsets are different, perceptions are different. So we have to work together to achieve the PDR friendly world. We are also under the Asani only, we are also creating micro menstrual leaders in the schools and the community who can advocate about it and who can be a future leader for it, right? For who can raise a voice for the right regarding the menstruation. So this that result we can see after 10 years how the whole society is talking about it for the right of the menstruator. So yeah, definitely we have take a long journey, and in near future we will definitely see some of the results of it. Amazing, amazing. Thank you so much, ma'am. You've very, meticulously you've put down all these pointers and whatever जैसे on ground जो भी difficulties है आपने बहुत अच्छे से आपने explain करा, and then उसके ऊपर क्या solutions आप build up कर रहे हो. So and also your vision of how far we'll take and to reach this year's theme or our target of making together the world as a period friendly world. Thank you so much, ma'am. It is a really pleasure to have you on call today. So we'll now move on to the next speaker, and so whosoever has any questions for Ms. Yati Desai, ma'am, please drop it in the Q&A section. We will be compiling at the end of the event, and we'll take up questions accordingly. Okay? So Yati, ma'am, please be there on call. So once the other two speakers are done, we'll get back. We'll have all the speakers together on the panel, and then the questions, the Q&A questions. We'll have like short Q&A questions. Let us hear from the audience, like, what is that they want to, truly ask or understand. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Priya. So next we have Dr. Moksha. Hi, Dr. Moksha. How are you doing? Hi, Priyanka. I'm good. How are you? I'm doing great. So first of all, happy World Menstrual Hygiene Day. Thank you. Same to you. So a brief about Dr. Moksha. So she's an MBBS doctor from Gandhi Medical College in Hyderabad. She is a dedicated healthcare professional who's not only like into the normal healthcare facilities, but she is more about creating awareness, especially around the menstrual hygiene. So last year, like we conducted an event here in Hyderabad, and so we have actually witnessed the kind of questions we got from men, especially because I think we expected a lot of women will join, but it turned out like there were a lot of men, and very patiently and very in a very subtle manner, Moksha put down those queries. I mean, she answered all the questions which we had during the session, and it was a very I think it was a very good learning session for all of us, because we never knew, we don't ask men like what queries do they have in this area, and we kind of assume, and it was very refreshing for us to know the kind of, I don't know, myths which they had in their mind, and the curiosity to learn more about this. So yeah, so again, bringing in here Dr. Moksha for the second time with us for the World Menstrual Hygiene Day. Very, very happy to have her on Happy board. to be back. So so come on, now let's just dive into the Q&A straight away. So आज Sure. हमारे जो like जितने भी लोग हैं in this call, so it's a mix of both, like I mean the people have joined in from all over India. Okay, कुछ लोग नॉर्थ से ज्वाइन किए हैं, कुछ आई थिंक महाराष्ट्र में किसी महाराष्ट्र से, कुछ कर्नाटका से, नॉर्दर्न कर्नाटका,
and then few people from Andhra Pradesh also. So that's why हम लोग will try to maintain a mix of language कि हम थोड़ा English में भी बोलेंगे और हम थोड़ा हिंदी में भी हम cover करेंगे, because at the end of the day हम चाहते हैं कि लोगों तक हमारी बात पहुंचे और वो समझे, ठीक है? So Agreed. and Moksha is fluent in all languages. She's even fluent in Telugu. So if anybody has any queries in Telugu, please just drop it down in the Q&A section. We will take it up at the end, and we'll try to address all of them. Okay. So now let's dive into the question. So, Dr. Moksha, so for you, how does a period-friendly world look like? Okay, so if I have to put it in one word, I would say inclusive. Okay, so as women of menstruating group, we want to feel included. We want to feel inclusive of the society, and we want to feel safe, and we want to make sure that the society is ready and is catering to our needs. So to put Right. that in one word, I would say inclusive. But let's discuss. So if you have to discuss it in in detail, Hmm. we can discuss it in 5 points. One, access. Okay. So access of menstrual products and healthcare. Affordable, quality healthcare products. Okay. Mm-hmm. Which is widely available to public, irrespective of their economic disparities. So chahe wo, you know, if they are able to afford or not. That should not be a deciding factor कि इनको quality products मिल रहे हैं या नहीं. వాళ్ళు అఫోర్డ్ చేయగలరా లేరా అది మ్యాటర్ కాదు బట్ ఎవ్రీ ఉమెన్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు హ్యావ్ దట్ సేఫ్ అండ్ హెల్దీ పీరియడ్స్ దట్ Right. ఈస్ వన్ థింగ్ ది సెకండ్ ఇస్ ది హెల్త్ కేర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సో ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ మెన్స్ట్రుअल हेल्थ केयर that is catering to all age groups तो चाहे Okay. छोटे हो या बड़े हो చిన్నోళ్ళైనా పెద్దోళ్ళైనా you know uh, providing treatment to all age groups again irrespective of their economic status. The second part is awareness. So the last thing, as you were speaking, so the last year when we conducted the session, I was pleasantly surprised. There were more men than women, and men from all age groups. So men were there Right. for their wives, for their kids, for their grandkids even, and Yeah. everybody had so many questions, and I was so happy to answer to all of them. And the first thing in awareness is to talk about it. When we talk about it, we are acknowledging that there's a gap. And when we acknowledge that there's a gap, we are going to do something to fill in that. Right. So Mm. the second would be the awareness. The third is accommodation. I want to live in a period friendly world where I know that me and my fellow women being accommodated. So be it in workplace, schools, colleges, Mm. the menstrual leave policies or flexible working arrangements which understand that Mm. women who are menstruating have different requirements Mm-hmm. and they're providing this safe space for me to Mm-hmm. communicate the needs. And the fourth part is the support, both cultural and social support. Culturally and socially, there's a lot of stigma associated with menstruation. Mm-hmm. So, be it in rural or be it in urban areas, irrespective of the location, there's always the stigma associated to Mm. varying degrees. In rural areas, it's a lot more than we can even imagine. Mm. That being said, we need open, respectful conversations to keep happening, starting from our own families, starting Right. from our own parents, grandparents, aunts, Mm. uncles, societies. We have to normalize the talks on menstruation. And the Right. last and final is innovation. So every woman is different. So every woman's period is different. And every woman's period's needs are different. So Mm. the innovation, it needs to keep on changing, which will cater to the needs of all these women. There's Okay. no one solution that fits for everybody. And Mm. lastly, but not the least, sustainability, Mm. which is both environmentally sustainable as well and Mm. also is healthy for the woman. Right. You know? I So, have like a separate question on that for you. Okay, I would want to okay, discuss a little bit more on that, because I think so, as far as I remember, so last year we were focusing more on the zero waste period.
So our whole Right. our whole discussion was more towards what are the alternatives which are available. How would you again, even if you have the alternatives, जैसे भी नॉर्मल जो what do you call, जो नॉर्मल प्लास्टिक वाली पैड्स है, ठीक है, तो उसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, ठीक है, कई Right. लोगों को पहले वो अवेलेबल क्या ऑल्टरनेटिव्स है वो नहीं पता, Right. एंड अगर पता भी है तो फिर नाउ हाउ वुड दे either get access to it or is it affordable or how to use it. तो बहुत सारे मैंने लोगों के दिमाग में ये सब क्वेरीज रहती. सो लास्ट ईयर हमने जब ये इवेंट कंडक्ट करा था, हमने लाइक हम लोग ना ज्यादा ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे फोकस कर रहे थे, एंड हम लोग Yes. लाइक मी एंड मोक्षा बाय द वे वी बीन यूजिंग कप फॉर ओवर 3 to 4 years. 4 years से ऊपर तो हम लोग यू बी यूजिंग एंड वी बीन प्रमोटिंग बिग टाइम ऑल्सो. तो या लाइक काफी हम सोचते कि हम women को पता है कि क्या टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, बट नहीं, लाइक हम बस अज्यूम करते हैं कि लोगों को पता है. इवन अर्बन अर्बन एरियाज में ही ये काफी हद तक ये गैप है कि जहाँ पे लोगों को नहीं पता कि ये मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है, या ऑर्गेनिक पैड्स क्या होती है, या क्लॉथ पैड क्या होता है, पीरियड पैंटीज क्या होती है, नहीं पता है. और And अगर even पता if भी है, they know, they are या very hesitant to change it. yeah, even if they know, see, they'll be, even if they know, it is not again accessible. Do we have it in our nearest pharmacy? No. Like when I had to buy a cup, I had to look at online. Online Amazon पे या हर जगह पे जाके मुझे फिर देखना पड़ा. मेरे नियरेस्ट केमिस्ट शॉप पे नहीं मिला. हम बाकी सब चीजें, अब नॉर्मल पैड्स तो बहुत सारे भरे भरे रहते हैं, बट लेकिन अगेन इफ यू वांट दैट alternatives, it should also be accessible, right? So that is still there. The topic, I think, we dealt deep last year, and we were also talking on the disposal mechanism. अगर आप चलो अभी Yes. पैड्स यूज कर रहे हो, तभी उसको आप डिस्पोज कैसे करो, इन्वायरमेंट में ही जा रहा है वापस, राइट? तो वो सब इट इज स्टिल देयर, बट what we feel कि this year, just to talk about menstruation is like, I think, the core before you build up the sustainable practices also. Yes. आप सस्टेनेबिलिटी की बात तभी कर पाओगे या कुछ ऑल्टरनेट्स की बात तभी कर पाओगे जब उस पर्सन को पहले से पीरियड्स के बारे में पता तो रहे. तो Yes. कई लोगों को वो भी नहीं पता है. तो आज का जो हमारा एफर्ट है, एवरी ईयर जब हम इस दिन पे ये स्पेसिफिकली हम इवेंट इसीलिए कंडक्ट करते हैं ताकि लोगों को पहले उसके बारे में एक अवेयरनेस है, एक एटलीस्ट पता रहे कि क्या, तब जाके हम ऑल्टरनेटिव्स देख पाएंगे. Yes. सो जैसे डॉक्टर मोक्षा ने कहा कि दैट पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स की व्हिच वन हैज टू कंसीडर. इट इज ट्रू, वी हैव टू. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Because I think हम लोग सिर्फ sustainability पे लेके ही we can conduct like a different webinar altogether, me and Moksha, because last year we thought it will be like a 1 hour or a 1.5 hour event, and it literally went up to like 3 to 4 hours. And people are still like very curious about questions कि that हाँ कैसे dispose होता है, क्या होता है, सब कुछ. So yeah, again taking the paucity of the time, let's stick to this current year's theme, and let's first ensure कि that periods के regarding जो awareness है कहाँ तक पहुँची है. So, okay, now you're a doctor, right? So, what motivated or what motivates you to continue advocating for menstrual health and breaking the stigmas and talking about these taboo topics? Because like for you, it's just one of the topics which I think as a doctor you deal. But I'm sure like आपको क्या motivate करता है कि आप menstrual health के बारे में आप बात करें? Yes. So, as you rightly said, as a doctor, I am dealing with a lot of other taboo or topics associated with stigma. Okay, and menstruation is just one of them, as you rightly said. But which again answers the question, what motivates me. So long before I became a doctor, I was motivated to talk about this. Right. So again, the period-friendly word that we discussed, that is something that gives me hope that, in the near future, it becomes a reality. And that is what is motivating me every day to talk about, in my own way, in my own small way, take one step at a time, breaking one stigma at a time. Yeah, I do hope so, as Desai ma'am just said. The situation 10 years ago
was different, Today it's much better. 10 Right. years from now, it's going to be even better, right? So we live in that hope. Um, Mm. but again, just imagine what we can do when we break these stigma. We are going to Totally. break the stereotypical barriers from movement, which will promote gender equality. We can Mm. improve the overall physical, mental, emotional, and social well-being of women. This is going to provide this is going to let her access equal opportunities, okay, to avail education and to pursue careers. This is going to address period poverty and ensure that women are going to have comfortable periods irrespective of economic disparities, as we discussed. Right. Overall, it's going to create an inclusive and a safe space for women as a menstruating woman. So this Right. is what motivates me every day. Yeah. that is so inspiring, Dr. Moksha, because as a डॉक्टर प्रोफेशनल आप होते हुए भी आप इस स्टिग्मेटाइज्ड एरिया के बारे में आप हमेशा ऐसे ही हमें आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में समझे एंड इसको एज क्या ये ऐसा टॉपिक जो आप लड़कों के सामने नहीं बात कर सकते, घर वालों के सामने बात नहीं कर सकते, वैसे ना रखते हुए एक एक कॉमन टॉपिक, इट्स लाइक एनी अदर हेल्थ कंडीशन और हेल्थ थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग, राइट? आई Yes. मीन जितना आप उसको एक्सेप्टेबल बनाओगे तो आई थिंक उतना इवन सोसाइटी में ओपन अप हुई इन सब चीजों के बारे में। Yes. तो thank you so much for people like you who are actually supporting and advocating. I think more and more women also feel very comfortable to talk, and especially since you're a doctor, people will, I think, listen to you because chalo, it is coming from a doctor, right? So I hope so. yeah. I mean, I truly believe that. So okay, chalo, now let's move to the next question. So in your experience, have you like come across some stigmas around like women's health? Like, is there any impact of these stigmas on the women's health? Oh, definitely. So, Just one as example we, would be fine. Then okay, we'll move on to the next. okay. So which one should I choose? There's so many. Mm. See, the whole topic of menstruation itself is you know, is very taboo to talk about, right? So Right. when there are health problems associated with that, Mm. women don't right away come to the doctor. Mm. They assume that, as a woman, bearing pain is Mm. something that I have to do. So Mm. that will sometimes delay the diagnosis of certain serious conditions like endometriosis, or say if a woman is, bleeding excessively. She Oh, would be okay. like, okay, this is how the periods are going to be. She's not going to consult a doctor until it's too late. And by that time, she might be anemic. Mm. And, anemia is another whole different topic. So I think Mm. the most serious thing would be that people approach healthcare professional quite late because they don't give importance to menstrual health as much as they would give to the general health. Okay, Mm. so like they Mm. like how the mental health takes a backseat. Right. So similarly, menstrual Mm. health is also getting neglected Mm. because they think that okay, it's common, it is going to happen with everybody. Mm. So that is one place where I've seen that the stigma is the reason why, the woman's health is getting affected. Right. Yeah, I think that's yeah, that's still there. And I think we as a women, not only like kids, who are going through this menstruation, but even like our moms, if you see, they neglect so much when it comes to their basic health. Exactly. So, Exactly. which is again like I mean, I think we need a lot of motivation as daughters, or as anybody in your family, like you have to have that open conversation even with your parents, even with your mom, like when if अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज है तो आप बताइए, आप इसे इग्नोर मत कीजिए। तो Yes. वो एक ओपन डायलॉग आई थिंक एज अ वुमेन हम लोग को रखना काफी जरूरी है। तो इट माइट नॉट Yes. बी अबाउट आवरसेल्व्स, बट सामने वाले के लिए भी काफी वो हेल्प आउट हो। एंड Yes. या नाउ स्पीकिंग अबाउट दैट एक्चुअली, सो आई थिंक यू वुड हैव विटनेस्ड दिस कि आजकल लोग लड़कियों को प्यूबर्टी जल्दी हिट होता है, राइट? Yes. सो व्हिच मींस the awareness also has to start from a very early age. Okay, Definitely. now how well do you think in our like Indian societies, like are we, or in our own families, are we open about discussing
or discussing about menstruation, or preparing themselves so that we can support them for the upcoming years? So the answer is quite ambiguous because to be told because it's affecting the kids. Mm. A lot of parents and families, they're really concerned because this is one Mm-hmm. of the most uh, this is one of the frequently asked questions. A lot of parents, a lot of family, friends, हम्म। relatives, they I'll keep just repeat the asking me this question in question. Hindi also once, okay? So Sure, basically sure. मैं ये बता रही हूँ कि आजकल जैसे लड़कियों को पीरियड्स जो है, बच्चों को जल्दी आ जाते हैं पीरियड्स। लाइक हमारे मॉम्स के जमाने में जैसे जैसे मुझे जब पीरियड्स आया था, तो आई गॉट माई पीरियड व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, ठीक है? और मेरी मॉम को उनके टाइम पे पीरियड्स जब जब वो 10th या 11th में थी, तब शी गॉट हर पीरियड्स। सो व्हेन आई गॉट माई पीरियड्स, मेरी मॉम वो तो बैठ के रोने लग गई कि हाय मेरे बच्चे को जल्दी आ गया पीरियड्स, ठीक है? And she was not in that state to make me comfortable and make me prepared. So which was I mean, though I was in 7th standard, it's still like fine, like where at least आपके दोस्त है जो लोग शायद you're going through the same stage, so I reached out to them. But again, now if like for my sister, it was like I think she got her periods in 5th standard. Okay? So when it happened like that time, I was at least there. I could take care of her, and I made her understand कि ऐसा ऐसा है. But जैसे अभी आप जैसे देखते जा रहे हो कि वो एज ना वो कम होता जा रहा है, कि जो पीरियड्स आने वाला जो एज है, कब कहाँ पे अपने पेरेंट्स के टाइम में शायद वो 10th या कभी आता था, फिर हमारे टाइम तो 7th 8th तक वी स्टार्टेड गेटिंग पीरियड्स, एंड नाउ इट्स लाइक लिटरली 4th या 5th स्टैंडर्ड में ही, even before that also few kids are getting, because of maybe the lifestyle changes or hormonal imbalances, I don't know what. But since periods अभी इतने जल्दी आए, तो as a family हम अपने बच्चों को कितना हम प्रिपेयर कर पा रहे हैं इसके बारे में, ताकि हम उन्हें स्टार्टिंग पहले से बचपन से उन्हें सपोर्ट करें. So now Dr. Moksha is actually going to speak on Okay. So you explained most of it, Priyanka. Thank that. you. So yeah, so I was just definitely, trying to set the tone. yeah. So definitely, see, there's something called precocious puberty, and then there's something called premature, menarche. Menarche is when the girl starts menstruating, and menarche is part of the puberty process, right? So when we talk about this, we have to understand that the incidence of precocious puberty has increased. So it does not just affect girls, it's affecting boys as well. We are saying that both girls and boys are attaining puberty much earlier than what we have seen, you know, in previous generations. And there's a study that says that, every 30 years, the onset of puberty is going to, decrease by 1 year. So if the normal age is 8 to 12, so they're going to start 7 to 12. But that being, that's set aside. What is important here is why. Why are we seeing more cases of precocious puberty? So there are always multiple causes for any condition. Okay. The most important would be the environmental factors. There are obviously genetic factors. Some girls attain puberty much earlier than others. It might be genetic, it might be nutrition, it might be because of rising rates of obesity and lack of, exercise. But again, something that is not really under control is the environmental factor. There's something called endocrine disrupting chemicals. So, not going into much detail about the biology, but the process of puberty essentially is very hormonal. Okay. And these chemicals are going to disturb the endocrine system. So, they're potentially one of the most important causes of the increasing rates of precocious puberty. And I would suggest all the parents, not just parents, everybody just to take care of the kids in their family. Make sure that you're using the products consciously. You're checking what are the ingredients, making sure that you're providing good nutritious meals to your kids. You're avoiding preservative foods. You're making sure that your kid is getting enough exercises, right? Okay. And Okay. right. Yeah. So because this is very, very important, precocious puberty has a long-term health implications, on the physical health, mental health, social health, because they're going to feel isolated, physically they're going to they're not going to understand what is happening to their body, right? Okay. And they're going to feel isolated, they're going to feel stressed, they're going to feel Right. anxious. So
the parents, the family members, they have to be well informed so that they can better prepare the kids. And always consult a medical professional. Okay. Okay. Don't just keep worrying about yourself. Don't try to find answers on Google. Consult a medical profession because every person is again, I always say this, every person is different, every kid is different, every human is different. Okay. So consult a doctor and take it from there. Get a workup, take it from there. So now what Dr. Moksha wants to, put it on like few points is that आजकल हाँ बच्चों को जल्दी आ रहा है periods, but that's because of the environmental factors mostly. ठीक है. Now, as a parent or maybe as a family, if you have a child who's going through who's जिनको periods जल्दी आ रहे हैं या नहीं तो in fact in general भी आपको वो awareness तो create करना ही है सबसे पहले even before they get periods. ठीक है. Second चीज, ensure that the kids have a good healthy lifestyle. Okay. The junk foods and everything, it's going to disrupt their hormonal hormones, and it's going to create a lot of issue. And third, ensure that they are physically active. So physical fitness rahe, properly, um, like maybe put them into some sports or something, and then they are taking care of it. And fourth is that the family members have to be like priorly ensured. मैंने आपके फैमिली मेंबर्स को पहले से ही ये सबके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि अभी आपके घर में अगर बच्ची है तो वो अगर she will be menstruating at some point of the other, right? Even before that, how do you first handle the situation? How do you create that awareness? वो बच्ची को आप कितना उसे comfortable आप कर सकते हो? Because उस completely वो उसके जो इनिशियल डेज में जैसे उसको बताया जा रहा है कि ये क्या है, वही उसके दिमाग में फ्यूचर हमेशा रह जाता है. If you tell her that it is something very common and it can be like it is something like just like any other thing, then she'll take it in that way. बट अगर आप उसको बोलोगे कि नहीं अरे आपको ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, you put her so much pressure, that will be like very difficult for a small child to handle. पहले ठीक है आपके पीरियड्स थोड़े लेट आते थे तो फिर एटलीस्ट वो बच्चों को मेच्योरिटी होती थी. आजकल very young, so you need to also understand their the age factor, keeping in mind. You have to create that healthy environment around. So very rightly put down, Dr. Moksha. So now just let's move on to the next part. So like we've talked about like various aspects of menstrual health and hygiene. Now moving on to some like very specific conditions, जैसे PCOS है and PCODs है. आजकल वो बहुत ज़्यादा like common हो गया है women. I think almost every other woman like is going through PCODs and PCOS state at some point of in her life, and these cases are quite increasing nowadays. एंड आई थिंक काफी टाइम तक तो लड़कियों को पता भी नहीं होता कि दैट वो उनको पीसीओडी और पीसीओएस है. तो अगेन अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि हम हमारा जो हेल्थ है हम उसे इग्नोर करते हैं, तो हम उसके बारे में इतना ज्यादा सोचते नहीं है. सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी लड़की को पीसीओडीज एंड पीसीओएस है, फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीओडीज एंड पीसीओएस में डिफरेंस क्या है, ठीक है. सेकेंड, अगर है किसी को भी पीसीओडीज एंड पीसीओएस, तो इसका इम्पैक्ट मेंस्ट्रुअल हेल्थ में कैसा रहता है? Okay. So, okay, You can let's just talk about cover it what in like very PCOD short. versus. Yeah, you can just cover it in little short. We're running a little out of time. Okay. Yep. So, we'll cover it in short. So, the difference between PCOD and PCOS would be the very last letter. T stands for disease and S stands for syndrome. So, essentially speaking, we don't really need to understand the difference. So, not until long ago, both were used interchangeably. A Okay. basic understanding, PCOS is a little severe, which has, excess of male hormones. But instead of going into the clinic, pathophysiology and everything, I'll just talk about the symptoms so that girls are aware, women are aware when, how and when to approach a doctor. So if your periods are regular, you're bleeding more, bleeding less, you're very having infrequent periods, the weight changes, you're gaining weight, you're not able to lose weight, and there is, a hair fall and a lot of acne, excessive hair growth, especially in areas that you don't usually expect from women, such as facial hair, thicker, coarser hair. So all these signs are indications of
that some hormonal imbalance is happening, which is essentially that the estrogen and the male hormones, there's imbalance in Okay. that. Can you So repeat the symptoms once again in Hindi? This is the symptom, right? yeah, sure. So yeah. वजन ज्यादा So बढ़ yeah, वजन ज्यादा बढ़ना, हाँ, hair fall, बाल झड़ जाना. um, बाल झड़ जाना, then hormonal imbalance of excess facial hair. Okay, so facial hair जो है उस ज्यादा facial hair होना, and again thicker facial hair माने थोड़ा जैसे जैसे मेल के होते हैं कि थोड़ा I don't know, like I mean softer hair नहीं but लेकिन अगर मोटा hair जैसा है, right? Yes, thicker hair. And menstrual irregularities, ज्यादा bleeding होना, कम bleeding होना, या Okay. 2-3 महीने periods नहीं आना, या या bleed continuously 10-15 दिन 20 दिन continuously bleed होना. तो Okay. ये सारे symptoms जो है, this will warrant immediate health care to, okay, health care needs, okay. तो Right. जब आपको ये symptoms हो रहे हैं तो please consult your gynecologist and take help. Uh, and essentially PCOD or PCOS, these are lifestyle conditions. Okay. Alongside with treatment, you need to make lifestyle modification, move more, try to eat healthier, eat clean, and try to manage stress management is really very, very important. And if if you're getting treatment, earlier on in the disease onset and making sure that it is not progressing, it's not going to get severe because once PCOS is happening and it is getting severe, there are, conditions like infertility that are developing. That is again one of the reasons why we are seeing a lot of infertility cases nowadays. The incidence of infertility is rising as well. So I don't want to scare anybody because there's a lot of fear mongering happening in the social media as well. PCOS and PCOD, it is very much treatable. It's a lifestyle, something that requires lifestyle modifications. So just work with your doctor and you'll be fine. तो अभी डॉक्टर मोक्षा ने जितने जो भी आपको सिम्टम्स बताए हैं, अगर आपको इनमें से कुछ भी अगर सिम्टम्स हो तो प्लीज आप इग्नोर ना करें, ठीक है? स्पेशली व्हेन इट्स लाइक आपको पीरियड्स इधर बहुत ज्यादा ही इरेगुलर हो या बहुत ज्यादा आपको फ्लो हो रहा है या नहीं तो कुछ महीने ऐसे स्किप हो रहा है, लाइक एनीथिंग, क्योंकि आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी लाइक आपको ना मेंस्ट्रुएशन में ना एक वो इंडिकेशन जैसा है जो आपको हमेशा वार्न करेगा ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है? तो ऐसे अगर कुछ भी अगर आपको सिम्टम्स होते हैं तो इट इज बेटर कि आप इमीडिएटली एक डॉक्टर गायनेक को विजिट करें. एंड and PCODs and PCOS, as Moksha said, Dr. Moksha said, कि these are all lifestyle, diseases. So lifestyle, अगर आप when you work, अगर आप जब आप डॉक्टर से मिलोगे एंड आप सब डिस्कस करोगे, आपका वेरी स्पेसिफिक टू योर बॉडी, आपकी बॉडी के हिसाब से क्या चीज आपको सेट करनी है, क्या क्या चीज आपको चेंज करनी है, मे बी आपको वेट थोड़ा रिड्यूस करना हो, जो भी आपको हेल्थ वाइज आपको जो भी चीजें डाइटरी कंट्रोल्स कुछ करने हो, या सब चीजें जो है आप आराम से आप उसको, ये ट्रीटेबल है, ठीक है? तो फर्स्ट चीज, आप घबराए ना कि अगर ऐसा कुछ हो तो, बट द मेन थिंग जो हम इस सेशन के थ्रू भी हम प्रमोट करना चाहते हैं कि that हम एज वुमेन बहुत चीजें इग्नोर कर लेते हैं, हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ठीक है, इट्स ओके. आई थिंक इट कम्स फ्रॉम आवर मॉम्स, हमारी मॉम्स भी इतना ध्यान देती ही नहीं अपने हेल्थ पे, तो कहीं जाके हमें हमें भी वही लगता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा. तो वो कोई बात नहीं वाला काम नहीं करना है कभी. हमें भी हमेशा ये सब हमारा बॉडी ना इंडिकेटर्स देता है कि क्या काइंड ऑफ चीजें शायद अंदर हो रही हो. तो एज डॉक्टर मोक्षा सेड, इग्नोर ना करें, सिम्टम्स है, फटाफट आप गायनाक के पास जाएं एंड आप अपने आप को चेक करें. एंड ये सब चीजें जस्ट एक लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू ट्रीटेबल है. अगर लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से भी ना हो, लाइक इट इज ट्रीटेबल समथिंग. सो यू गाइस हैव टू फर्स्ट बी वेरी पॉजिटिव अबाउट, एंड खुद तो ठीक है, अपना ख्याल रखें, बट लेकिन अपने आसपास भी आपके जितने भी लोग हैं, इधर आपके फैमिली में आप कोई विमेन हो, बड़े हो या छोटे हो, जो भी हो, या आपके दोस्त लोग हो, कोई अगर आपसे अगर ये चीज अगर डिस्कस करे तो फिर आपको भी यही आपको सजेशन देना होगा कि दैट आप इग्नोर ना करें, आप जाके आप चेकअप,
ठीक है. So thank you so much, Dr. Moksha, for having like a great discussion and सब चीजें हम लोग discuss किए again medical terms में भी and in general the stigmas around menstrual hygiene and all. It was a very insightful discussion. Thank you so much. Very, very happy to have you on board, have you for this session today. So now, moving on to our Happy to next be speaker. here. Yeah, you're welcome. And I think, okay, so guys, if you have any questions for Dr. Moksha, please drop in your questions at the Q&A section. We will be taking all the questions at the end. And very specifically, if it's for Dr. Moksha, just write down Dr. Moksha and then, write down your question. So it'll make our lives a little easier when we're sorting out the questions. So our team is already on it and they're doing some really great job and in ensuring that we ask really quality questions again. Okay. Also, one thing which I wanted to, okay, I think this is fine for it. So now, thank you so much, Dr. Moksha. We'll just keep you on, so please be there on call. Okay. We'll maybe in the next 15-20 minutes or so, we'll open our Q&As and we'll have a discussion. Thank you. And now next we have Dr. Jyoti Shinde. Dr. Jyoti Shinde, ma'am. Thanks. Hello, ma'am. How are you? Hi, I'm good. How are you? I'm doing good, ma'am. So again, wish you a very happy World Menstrual Hygiene Day today. Thank you and wish you the same. आप कैसे Very हो आज? crucial topic you have. We are going to discuss actually. Yes, absolutely. So, ma'am, I think most of the crowd जो अभी join हुआ है, they wanted to listen to us in Hindi. So, Okay. if we can have a conversation in Hindi, we'll try to No use issue. both. Majorly, Yeah. we'll stick to Hindi, and a few points I'll try to explain in English also. Okay, no issue. Okay. No issue. So I'll introduce Dr. Shinde, Jyoti Shinde, ma'am. She is an MD in medicine and is an expert in cervical cancer prevention. She has served the oncology department for over 5 years and is definitely the right person for us to discuss about cervical cancer today. She's associated with Jivika Healthcare. And they've conducted a lot of vaccination drives on under the CSR program. So, ma'am, let's just start off. First of all, let me welcome you. Thank you so much for I'm joining us also today. glad to be session of this part actually because menstrual hygiene it's a very crucial. It plays very crucial role in woman's health, especially Absolutely. reproductive system, Absolutely. infection related reproductive system and disease conditions. And Mhm. cervical cancer is one of these. Yeah. So so for people who have joined in, taking the leverage of the World Menstrual Hygiene Day today, we also wanted to touch on a very, very crucial topic, which is cervical cancer awareness. Actually. Okay. That's the reason, like every year I do talk about like just menstrual hygiene and maybe something related to the alternatives which we use or the taboos or how the disposal thing happens. Every year I think I've discussed all for the past 3-4 years. But this year Right. when I was just sitting down and when we were just curating this event, like kya karna hai, we want to do something different and we want to bring in really quality content or the awareness. एक ऐसी अवेयरनेस हम लोगों तक पहुंचा सके विमेन को कि हमेशा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में तो हर कोई आके आपको बोल के जाएगा, बट ये ऐसी चीज है सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस जो काफी लोगों को नहीं पता है आज के डेट में. And Kafi means 90% people don't know about the cervical cancer. What is the reason behind cervical cancer? Ma'am, in fact, I had no idea until last year. Actually, it's true. People who in the development sector, हम लोग को ही आइडिया नहीं था. Like मेरी बहन मुझे कहती थी कि अरे नहीं, there is this vaccine which you need to get. उसने हमेशा वैक्सीन पे फोकस करा है, बट लेकिन ये नहीं बताया कि वो क्यों, क्या, किस चीज के लिए है, क्या हो सकता है. No, what is the intensity of the problem? क्यों लेना है? Exactly. वो सब चीजें like वो हमेशा यही मुझे फोन करेगा, अच्छा तूने लिया नहीं, वो यूके में है by the way, तो उसने वहाँ पे वैक्सीन लिया and it's quite expensive over there. So she was like, यार इंडिया में फिर भी comparatively it's much lesser than UK, so you should go and get it done. And again, as women, I think हम लोग वो ignore कर लेते हैं कि हाँ ठीक है कर लेंगे. Hesitancy. Till the time I think वो एक ना ऐसे जानलेवा चीज ना होना, हम वो फोकस ही नहीं करते उसके ऊपर. Cancer word itself is a very scary.
Yeah, No one it's wants to be get diagnosed with cancer. एग्जैक्टली सो इस चीज की वजह से आई थिंक हमेशा से ही हमें से एक बहुत काफी इग्नोर टॉपिक रखे थे बट जिस टाइम से लाइक मुझे पता चला कि दैट नहीं यू नो इज समथिंग विच इज लाइक वेरी important topic to discuss. Okay, so I have a personal story. So my mom got diagnosed with breast cancer last year in October. And that was the first time, like, you know, हमारे घर में ऐसा कुछ होना. And till the time it I think doesn't happen to you and your family. आपके फैमिली तक जब तक कुछ होता नहीं, आपको वो उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती. अवेयरनेस नहीं तो होता है और हम वो एज अ उसका फैमिली सीरियसनेस जो बोलते हैं ना हम कि वो नहीं आता है एटलीस्ट. सीरियसनेस नहीं आता है. और जब मेरे घर में ऐसे हुआ तो हम लोग भले यू नो इट वाज इन अ फर्स्ट स्टेज एंड वी गॉट हर ऑपरेटेड, वी हैड सम रेडिएशन सेशंस एंड ऑल. तो मैं हॉस्पिटल काफी रेगुलर जाती थी एंड वहां पे कैसे ना वुमेन हेल्थ का वो एक पैकेज होता था कि आप इस पैकेज में आपको ये ये सब स्क्रीनिंग कर लो, ये मैमोग्राफी, करो. पैप एग्जैक्टली. स्मीयर, ये सब है करके. तो मैं सोच रही थी ये कौन सा चीज है. लाइक आई नो अबाउट ब्रेस्ट कैंसर बट आई डोंट नो अबाउट सर्वाइकल कैंसर. आई हैड नो आइडिया व्हाट इट वाज. और तो even if you're या going to search on Google it ना, तो it shows some images like spine images or some related images. ओह Even they are not showing the images of cervix exactly. मैम So एग्जैक्टली ये चीज ना मेरे को भी हमेशा डाउट था कि फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को पता भी है कि सर्वाइकल कैंसर हमारे कौन से cervical बॉडी पार्ट cancer के लिए है. होता क्या है? तो इसीलिए लाइक वी वर लाइक तो इसे when जब ये इवेंट मुझे स्टार्ट करना था आई वाज लाइक नहीं इस साल हम बात करेंगे इसके ऊपर भी. एंड आई वांट कि दैट यू नो जितना हो सके उतना अवेयरनेस हम स्प्रेड करें एंड यू नो मोर एंड मोर वुमेन और गर्ल्स शुड गेट वैक्सीनेटेड. Exactly. सो विल स्टार्ट ऑफ द इवेंट Yeah, नाउ. sure. आपको मैं Let me share my presentation so I श्योर can श्योर show ki where it starts, what exactly the cervical cancer, right? absolutely ma'am, that will be wonderful. I think the audience will love it. So in the meantime, I'll just ask you the first question. Yes. So menstrual hygiene जो है वो काफी crucial part होता है when it comes to women's health, right? But again, cervical cancer is also like one of another important aspect जो you know हमें which we have to consider. Now, what according to, can you just let us know कि cervical cancer के related क्या symptoms होती हैं? You know, like Causes if and symptoms. causes and symptoms. So basically, अगर कोई women अगर even to think that she has or I don't know कि क्या है, like what are the basic symptoms to just look out for? Yes, Okay? exactly. Yeah. Yeah. So first off, कि where it starts. Before to know कि what is exactly cervical cancer क्या होता है, तो ये start कहाँ से होता है? So can you see this tubular part here, cervix? Yep. Is this image is visible to you, Yashasvi? This part. Yes. Now I think it's Cervix. visible. Yes. Yeah. So this is I mouth think the of vagina uterus. and I mean is the female Yeah. reproductive part by the way guys. Part, So exactly. and इसमें भी बताएं. Please ma'am, Yes. continue. So the cervical cancer starts from here. This tubular part, cervix, where that I have mentioned here, cervix, right? Okay. So this is the reproductive system, image of reproductive system. So here it starts, okay? And the reason behind cervical cancer, actually we know the reason. Because if you ask me कि what is the reason behind other cancers, आपने बोला अभी कि आपकी मम्मा को भी हुआ था breast cancer. So there is no specific reason behind the breast cancer. Exactly. Obviously there are some aggravating factor. We can say कि precipitating factor as there कि lifestyle modifications, smoking, tobacco chewing, diet modification are the precipitating factor to get means वो कैंसर करने के लिए ये करने के लिए, right? बट एग्जैक्ट रीजन जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए हमें पता है. 70% जो सर्वाइकल कैंसर्स है वो होते हैं एचपीवी वायरस की वजह से. यू हर्ड अबाउट एचपीवी? Yep, I know now, but I don't think the other बाकियों को पता है. No one knows about that. So here is some reason. The HPV is mainly transmitted through sexual contact. And 70% of cervical cancer जो भी है और whatever precancerous cervical lesion जो भी है, it's caused due to HPV virus. There are thousands of HPV variants, means types of HPV, but all are not cancer causing exactly, right? Out of these 14, only 14 HPV viruses are cancer causing or high risk viruses. Okay.
Only 14 variants जो है only वो high risk 14 are cancer causing, and Okay. out of that 14, only 16 and 18 HPV virus 16 and 18 are cervical cancer के लिए Okay. responsible है. तो वो जो तो हमें स्ट्रैंड या वेरिएंट जो है HPV 16 and exactly 18 का जो वेरिएंट है only that is सिर्फ वो cervical responsible cancer to के लिए yes cause yeah करता है. Right, okay right, got it. and other reasons such as की sexual behaviors, poor genital hygiene, because बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी, बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी आपको जेनाइटल हाइजीन जो है मेंटेन करना है. एवरीवन इज डोंट नो अबाउट इट, राइट? सो तो सेक्सुअल बिहेवियर भी कैसा है, इसके ऊपर भी ये इन्फेक्शन डिपेंड रहता है कि कितना फ्रिक्वेंटली वो इन्फेक्शन आ सकता है. अर्ली एज ऑफ मैरिज, देन मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स एंड रिपीटेड प्रेगनेंसी, and cofactors like smoking and long-term use of contraceptive. These are a few causes of cervical cancer. But most important is HPV, because अगर आप 10 अगर females diagnosed हुए with cervical cancer, so out of the 10, 7 जो भी है उनके cervical cancer का reason HPV virus हो सकता है. Ratio you can say. Okay. Right? हाँ, सो 70% सर्वाइकल कैंसर्स जो भी है और प्री कैंसरस है वो एचपीवी की वजह से है. और एचपीवी इन्फेक्शन इज द इन्फेक्शन वी कांट ट्रीट वंस इट गेट, ओके, बट वी कैन प्रिवेंट इट. वह आपका एक बार एक्सपोजर हो जाता है, एक्सपोजर आ जाता है एचपीवी वायरस के अगेंस्ट, सो वी कांट ट्रीट दैट एचपीवी इन्फेक्शन क्योंकि वो एक्सपोज हो चुका है. और इट्स एन वायरल इन्फेक्शन, वो हमारी बॉडी है जो 99% क्लियर भी कर देती है. बट हम प्रिवेंट कर सकते हैं विथ वैक्सीनेशन. वी कैन प्रिवेंट दैट इन्फेक्शन, वी कैन इम्यून आवर बॉडी कि वो इन्फेक्शन होना ही नहीं चाहिए. So prevention is available, but treatment is not available there. Precancerous lesion ऐसे है वो हम ट्रीट कर सकते हैं. और हर एक इन्फेक्शन जो भी है, वजाइनल हो, सर्वाइकल हो, वो मीन्स कैंसरस ही है ऐसा नहीं है. ये जो मीन्स सबके मन में बैठा है ना, डर जो बैठा है, वो हमें पहले दूर करना चाहिए कि हर इन्फेक्शन वो सर्वाइकल कैंसर रिलेटेड नहीं हो सकता है. ठीक है. और कॉजेस सिम्टम्स है जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए. मैं स्लाइड इसलिए दिखा रही हूँ कि सबको ये अंडरस्टैंड, बिकॉज आई सॉ कि मेनी देर आर सम स्कूल गोइंग गर्ल्स आर अटेंडिंग दिस सेशन, राइट? So that's why I am showing you these slides. So cervical cancer symptoms are unusual vaginal discharge. What is mean by unusual vaginal discharge exactly? So white discharge, जो भी चीज है हमें नॉर्मल पता होनी चाहिए. So we can understand the what is exactly abnormal condition, right? So unusual vaginal discharge, white discharge is common, but when? Before, after menstrual cycle, mid menstrual cycle, क्वांटिटी कितनी है, उसका कलर क्या है, स्मेल है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है. अगर आपको कुछ भी अगर स्पेसिफिक वो लग रहा है, सिग्निफिकेंट लग रहा है, तो यू शुड हैव टू कंसल्ट योर फैमिली फिजिशियन, राइट? ये निग्लेक्ट नहीं करना है. एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग एग्जैक्टली क्या हो सकती है? मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर आपका रेगुलर साइकिल है, एक डेज फिक्स रहता है, किसी किसी का रहता है 28 डेज का, कोई किसी का रहता है 24 डेज, 28 डेज, 30 डेज है, 34 डेज का भी हो सकता है. तो आपका वो मंथली अगर फिक्स डेट है, 28 डेज का साइकिल रेगुलर है, और आपको इन बिटवीन ही आपके पीरियड्स आ रहे हैं, तो इट्स नॉट नॉर्मल, राइट? समथिंग इज एबनॉर्मल देयर, राइट? और हमारी बॉडी इंडिकेट करती है हमें, बट वी निग्लेक्ट दैट थिंग्स, वी नेवर एक्सेप्ट द थिंग्स एक्चुअली. सो एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर ब्लीड हो रहा है, पोस्ट इंटरकोर्स, पोस्ट सेक्सुअल एक्टिविटी अगर ब्लीड हो रहा है, और पोस्ट मेनोपॉजल, मींस पोस्ट मेनोपॉजल आपके एक बार मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं एट द एज ऑफ 45 अबव और 50 इयर्स. सो मेनोपॉजल पीरियड क्या हो सकता है एग्जैक्टली, ये भी पता होना जरूरी है. अगर 1 ईयर के
अगर आपके मेंसेस नहीं आ रहे हैं फॉर 1 ईयर, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि अभी ये मेनोपॉजल एज है। क्योंकि अगर आपका मेनोपॉजल पीरियड स्टार्ट हो रहा है प्री मेनोपॉजल, तो 1 ईयर तक आपको इंटरमीडिएट कभी भी आ सकते, इरेगुलर पीरियड्स आ सकते हैं, लेकिन 1 ईयर के लिए कंप्लीट स्टॉप है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आप कंसिडर कर सकते हैं इट्स अ मेनोपॉजल एज, मेनोपॉजल पीरियड है। उसके बाद अगर आपको ब्लीड हो रहा है तो इट्स पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, और वो हमें निग्लेक्ट नहीं करनी है, इग्नोर नहीं करना है। हेवियर एंड लॉन्गर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत ज्यादा हेवी ब्लीड हो रहा है, लॉन्ग डेज के लिए हो रहा है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द कॉज बिहाइंड दैट। मैं ये हर बार ये बात करती हूँ कि प्लीज डोंट कोरिलेट दीज साइंस एंड सिम्टम्स विथ यू, क्योंकि इनमें से आधे सिम्टम्स ऐसे हैं कि हर एक फीमेल को वो उसमें से एक तो भी सिम्टम मिलेगा आपको, राइट? कोरिलेट नहीं करना है, बट जस्ट डोंट इग्नोर दीज सिम्टम्स, राइट? Discomfort while urinating, loss of bladder control, pain during intercourse, constant fatigue, pelvic pain, unexplained weight loss and leg pain. उसके साथ और भी कुछ सिम्टम्स है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, फुलनेस ऑफ एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन पेन रहता है, हेवीनेस रहता है। सो दीज आर फ्यू सिम्टम्स वी नीड टू गेट रिजॉल्व, जो भी है कि कुछ भी कॉज है इसके बिहाइंड, तो वी कैन ट्रीट दैट कॉज, राइट? नॉट ऑलवेज कि ये सर्वाइकल कैंसर रिलेटेड ही हो सकता है, बट इन सब के बारे में जानकारी रखना जरूरी, जानकारी रखना बहुत जरूरी है। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दिस साइंस एंड सिम्टम्स एक्चुअली, कि क्या है एग्जैक्टली ये इसके रिलेटेड। और मोस्ट स्ट्राइकिंग अगर हम बताते हैं सर्वाइकल कैंसर रिलेटेड, तो जो फर्स्ट मैंने बताया है, अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज, अबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, हेवियर एंड लॉन्गर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस पे और पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये जो सिम्टम्स है ये 4-5, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स है तो हमें निग्लेक्ट नहीं करना है। अदर जो सिम्टम्स है इन्फेक्शन रिलेटेड भी रहते हैं, कभी कभी कुछ सिम्टम्स एनीमिया, फीमेल्स में वो बहुत ज्यादा रहता है, कॉन्स्टेंट फटीग, लेग पेन, ये सिम्टम्स तो एनीमिया रिलेटेड भी हो सकते हैं, राइट? लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये सिम्टम्स हमें इग्नोर नहीं करने हैं, राइट? अभी जितने भी बच्चे और जो भी लोग अभी ज्वाइन किए हैं सेशन में, आप ये अच्छे से प्लीज सुनिएगा, ठीक है? बिकॉज ये आपको मैम बहुत एफर्ट्स उन्होंने ये पीपीटी बना के लाइक यू नो ये पूरा शेयरिंग दैट नॉलेज, ठीक है? आई नो कि आप लोग कभी भी जाके फिर आप गायनेक्स से सेपरेटली बैठ के बात करना, इनफैक्ट आई डोंट थिंक गायनेक्स को भी लाइक वेरी स्पेसिफिकली इसके ऊपर नॉलेज रहता है, उनको वो नॉर्मल चीज पता होगी, बट लेकिन आई थिंक सर्वाइकल कैंसर रिलेटेड आपने जितना भी काम किया है इन द डिपार्टमेंट एंड यू हैव दैट क्लैरिटी, इट्स वेरी ग्रेट क्लैरिटी से मैम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड अगर किसी को ये पीपीटी, अगर ये प्रेजेंटेशन अगर किसी को चाहिए, तो आप बस आप नीचे मेरे को जस्ट ड्रॉप इन अ मैसेज, ओके? एक Q&A में आप डाल दो। एक्चुअली जितने भी लोग रजिस्टर किए हैं फॉर द इवेंट, उन लोगों को तो आई विल शेयर इट ओवर ईमेल, ठीक है? इफ नॉट, मेरा लिंक्डइन पेज अभी हमारा टीम they'll put up that they'll put down my LinkedIn page, you can connect with me over there and I will send it to you across, ठीक है? तो अभी बस आराम से आप देखो, सुनो, अच्छे से रिलेट करो जो भी चीजें हैं, टेक अ नोट ऑफ इट। आपको ये प्रेजेंटेशन हम किसी भी तरह हम पहुंचा देंगे, ठीक है? सो एक ये है कि HPV इन्फेक्शन अगर एक बार हो जाता है तो फिर हम सर्वाइकल कैंसर हो सकता है क्या हमें? सो नहीं, though it's a 70% cervical cancer is caused due to HPV virus, but HPV infection, it's the means it takes time to get convert into cervical cancer, and window period is 15 to 20 years. Can you imagine? हाँ, और एक बार में हुआ है फिर वो सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट होगा ऐसा नहीं है। रिकरेंट इन्फेक्शन अगर बार बार इन्फेक्शन आ रहा है तो वो प्री कैंसरस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद में 15 to 20 इयर्स बाद वो सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है या डेवलप कर सकता है सर्वाइकल कैंसर। ये नॉर्मल अगर इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रांग है उनमें वो 15 to 20 इयर्स ऑफ विंडो पीरियड है, लेकिन जो इम्यूनो सप्रेस्ड बोलते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनमें वो 5 to 10 इयर्स का विंडो पीरियड है।
तो विदिन 5 to 10 years उनको चांसेस है कि वो सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है. सो वी हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वी कैन गेट स्क्रीन इन बिटवीन, अर्ली डिटेक्शन हो सकता है. और हमारे जो भी सिम्टम्स हमें ये, अगर मैंने जो सिम्टम्स बताए हैं, अगर आप इसके ऊपर ये करते हो, ध्यान रखते हो या निग्लेक्ट नहीं करते हो, इसे इग्नोर नहीं कर सकते, तो अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, हमें समझ में आएगा और दैट कंडीशन वी कैन ट्रीट. सो एडवांस कंडीशन में जो भी एडवांस डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है सर्वाइकल कैंसर, क्यों एडवांस मींस सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोज इन एडवांस कंडीशन, बिकॉज वी नेवर डिस्कस दिस सिम्टम्स विथ एनीवन. हम घर फैमिली मेंबर के साथ भी ये सिम्टम्स डिस्कस नहीं कर पाते हैं. हमने ये सिम्टम्स को हमारा एक रूटीन डेली लाइफस्टाइल बनाया है कि नहीं, ये सिम्टम्स है, अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं हो सकता है. सो हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 15 to 20 इयर्स का विंडो पीरियड है, हम इसमें ये सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है. राइट. स्क्रीनिंग वगैरह में सो ये कंप्रेहेंसिव अप्रोच है जो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए WHO का. सो उनको प्राइमरी प्रिवेंशन जो भी है वो बोलते हैं कि HPV वैक्सीनेशन जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन है. सेकेंडरी प्रिवेंशन आता है जो है स्क्रीनिंग है, और टर्शियरी प्रिवेंशन जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है. सो प्राइमरी प्रिवेंशन जो है HPV वैक्सीनेशन. सो हमें HPV वैक्सीनेशन लेना कब चाहिए? राइट. यस, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. हाँ, एक्चुअली इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, मैंने बात पहले ही क्लियर की है. सो मेरा मानना ये है कि बिफोर टू स्टार्ट एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, इट्स द आइडियल पीरियड टू गेट वैक्सीनेटेड. सो उसके डोसेस है, एज ग्रुप में कौन से डोज लेने चाहिए, क्या है. तो 19 to 14 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में 2 डोसेस है, और 15 to 45 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में 3 डोसेस लेने हैं. लेकिन आइडियल एज ग्रुप अगर हम बोलते हैं तो वो है 9 to 26 ऑफ एज ग्रुप, उनमें ये वैक्सीनेशन होना चाहिए. ठीक है. सेकेंडरी प्रिवेंशन आता है स्क्रीनिंग. तो स्क्रीनिंग बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि स्क्रीनिंग क्या होता है. और there's a lot of hesitation, I guess, ma'am, when it comes to काफी एक हिचकिचाहट रहती है. हेजिटेशन ही है कि हम ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं ये पॉइंट जो भी है. लैक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस ही नहीं है पीपल में कि ये कुछ ऐसा टेस्ट भी रहता है, लाइक पैप स्मीयर टेस्ट बोलते हैं. तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि पैप स्मीयर टेस्ट है क्या एग्जैक्टली, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, एंड क्या कॉस्ट पर इसका है रहेगा पैप स्मीयर का. सो इसका एक एज क्राइटेरिया है कि कौन सी एज में हमें ये करना है. एट द एज ऑफ 21 years देयर इज नो नीड टू डू पैप स्मीयर. 21 to 29 जो भी एज ग्रुप है उनको पैप स्मीयर वंस इन 3 years करना है, एवरी 3 years आपको ये करना है. 30 to 65 years के एज ग्रुप में आप पैप स्मीयर के टेस्ट के साथ साथ आप HPV टेस्ट करवा सकते हो. हाँ, लेकिन अगर आप HPV एंड पैप स्मीयर साथ में करते हो तो वी नीड टू डू इट वंस इन 5 years ओनली. No need to do in every 3 years, right? और above 65 years, अगर आपने 30 to 65 years of age group में adequate pap smear test करवाए हैं, अगर वो negative है रिजल्ट, तो there is no need to do any test after 65 years. एक्सेप्शनल केसेस है कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीड हो रहा है और किसी ने कोई टेस्ट नहीं करवाया, तो फिर उसके एज ग्रुप के बाद अबव 65 इयर्स भी हम सजेस्ट कर सकते हैं जो हमें टेस्ट करना है. और टर्शरी जो भी है वो तो कीमोथेरेपी, सिस्टमिक ट्रीटमेंट इज अवेलेबल देयर, राइट. जो भी है हमें इन्वेजिव कैंसर अगर डायग्नोज हो जाता है, कैंसर है डिटेक्ट हो जाता है, तो फिर ट्रीटमेंट इज अवेलेबल देयर. So we can treat them with chemotherapy, radiation therapy, surgeries are available there. Okay, but it's a tertiary plan. Right. So we have before tertiary, we can prevent it with vaccination. We can screen it to get early detection. So we can get cure.
right? Right. Early detection, जो भी cervical cancer is the good cancer because we can treat that cancer actually. We know the cause Okay. behind that. Unless and until we don't know cause or reason behind the any condition, disease condition, we can't treat that condition actually. So we Got know it. about the cervical cancer. If we know about why the cervical cancer it happens, so we can treat that condition. We So can ma'am, prevent like that condition. like Yeah, अभी कभी HPV vaccination है. So how effective are like the vaccines? expensive, No, effective. effective. Efficacy of vaccine is means it, at the age of 9 to 26 years, it's more than 98% efficacy. Okay. If you get vaccinated at the age of 26 years, so we आपको 98%, more than 98% efficacy. We can say 100% here actually. So 9 to 26 वाला जो age है आपको almost 98% efficacy रहेगा. Efficacy है. लेकिन after 30 years of age group अगर लेते हो और if आपको exposure already है means आप married वगैरह हो तो वो 70% तक आ जाता है. क्योंकि मैंने पहले ही clear किया है कि HPV once you get exposed with HPV virus we can't treat that. Before to get exposed we can prevent it. हम immunity बढ़ा रहे हैं कि हमारी body क्योंकि viral infection है वो get clear by its own. Right. So हमारी उतनी immunity strong होनी चाहिए कि हमारी own body उसके against fight कर सके, right? But it's such a very That's why good we want efficacy, to na? Like 98% actually. For like 9 to 26 age, may if any women gets herself vaccinated, 98% efficacy is like the amazing one. Like and you can protect that's why I'm yourself saying from it's like like life. 100%. Yeah. It's like 100%, right? And it's best gift for women actually. We Yeah, have absolutely. vaccine available. Yeah. Exactly. So even when I was, reading about it, and then people told me that there is, I mean, this is the only, I think, cancer which is prevented by a vaccine, and you have like almost It's the 100% only efficacy. cervical cancer. Cervical cancer is there, vaginal cancer, anal cancer, and oral and throat cancer. Okay. Because HPV virus is not means only cause of cervical cancer. Other cancers are also there. मेल्स में स्पेशली जो है हाँ क्योंकि ये भी स्टिग्मा है इट्स ओनली HPV वायरस एंड HPV वैक्सीन इज ओनली फॉर वुमन नहीं ऐसा नहीं इट्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स या The same vaccine they can use like men का भी. Yes, actually, because we are more focusing on cervical cancer because the death rate of cervical cancer is at higher level. Okay, for women. Daily 200 women are dying only because of cervical cancer. It's the second most common cause of death amongst women in India and fourth most common worldwide. That's why we are focusing. I mean, in 8 to 9 months, one woman is dying only because of cervical cancer. But only women are not responsible as it is already I said ki it's a sexually transmitted disease. So both partners are equally culprit for this. तो लाइक मेन के लिए जैसे अभी आपने वुमेन का एज बताया कि 9 से 26 तक तो मेन के लिए भी लाइक सेम एज ग्रुप है सेम एज ग्रुप ओके एंड उनके भी सेम इतने ही डोसेस होंगे लाइक जैसे डोसेस भी सेम है ठीक है तो मेल में जो भी कैंसर्स है ना वो स्पेशली एनल ओरल थ्रोट एंड इसोफेगस के भी है ओके या बट सर्वाइकल कैंसर इज अ कैंसर की हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं प्री कैंसरस कंडीशन है जो भी है हम डायग्नोज कर सकते हैं अदर कैंसर कंडीशन के लिए ऐसे प्री स्क्रीनिंग टेस्ट कुछ भी नहीं है कि हमें पता चले कि आपको कैंसर हो सकता है अगर हम स्क्रीन कर सकते हैं HPV इन्फेक्शन है तो हम उनको बता सकते हैं कि प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ क्योंकि लाइफ टाइम आपको कभी भी मींस होने के चांसेस हो सकते हैं यू आर एट हाई रिस्क बट मेल पार्टनर के लिए ऐसे कुछ टेस्ट नहीं बना है कि हम उनको पहले से ही डिटेक्ट कर ले कि आपको ये हो सकता है सो फीमेल के लिए ये है कि हम टेस्ट स्क्रीन कर सकते हैं तो ये स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली So I guess all the students and women, everybody who's there on the call right now, you are now aware of cervical cancer. होता क्या है ऐसी कैंसर है जो आप वैक्सीन से आप प्रिवेंट कर सकते हो which is even much better and if you are in the age group of 9 to 26 you can get your doses and you'll be protected for efficacy आपका 98% होगा 98% आपको ये prevent I mean आपको protect करेगा
वही अगर आप 26 के ऊपर हो तो भी इट्स ओके, यू कैन टेक, बट ओनली द परसेंटेज विल रिड्यूस टू 75% of efficacy. So the option is, and again, you need to get some in regular intervals, you need to get a pap smear done and just see that, you know, if it's affecting you or not. That's it. Yes. But I hope through this session you are now aware of what it means, and आपके end पे क्या action ले सकते हो. It is these vaccines. Okay. And yeah, so now ma'am, moving ahead, based on your experience, when it comes to, like, you know, vaccination drives, because I know like Jivika Healthcare does a lot of vaccination drives on HPV prevention, or cervical cancer prevention, and a lot of, you know, awareness you do. Like it's just not vaccination, but it's coupled with awareness. So which is something I really like about it. तो आपके एक्सपीरियंस में जब आप ऐसे वैक्सीनेशन ड्राइव्स के लिए जाते हो तो आपके लाइक मेन चैलेंजेस क्या रहे हैं जब आप इधर पेशेंट से आप लाइक इट कैन बी एनीथिंग, ईदर डीलिंग विद द पेशेंट और द रिसोर्सेज और द अवेयरनेस इवन अमंग पीपल, और लाइक व्हाट आपके हिसाब से मेजर चैलेंजेस आपको क्या लगता है? एक्चुअली जब हम व्हेन वी स्टार्ट टू कंडक्ट द अवेयरनेस सेशन ना, तो फर्स्ट चैलेंज ये था कि हाउ टू रीच देयर, कि कॉलेज हमने ये सेलेक्ट किया था कि एज ग्रुप जो भी है 9 to 26 इयर्स ऑफ एज ग्रुप कॉलेज स्टूडेंट्स में है. सो लैक ऑफ नॉलेज जो है वो बहुत दिखा अमंगस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स. इवन जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उनको भी ये पता नहीं था एक्चुअली कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, एचपी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, स्क्रीनिंग क्या रहती है, और एक्सेप्टेंस जो है ना वो नहीं था एक्चुअली. उनको सुनना नहीं था. जो एज ग्रुप ही वो ऐसा है ना कि वी डोंट वांट टू लिसन टू एनीवन वो एज ग्रुप में. राइट. तो लैक ऑफ नॉलेज तो था ही वहां पे. और वन मोर थिंग कि हम जब उनको ये बात ये करते थे कि हमें ये सेशन आपके लिए कंडक्ट करना है आपके स्टूडेंट्स के लिए, तो मीन्स ऐसे कि मेल जो भी थे तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी नीड टू डिस्कस दिस टॉपिक फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड लाइक दैट, कि फॉर गर्ल्स एटलीस्ट. बट मैंने ये फेस किया है कि बहुत सारे जो वुमेन्स फीमेल्स कैंडिडेट थे ना, हम जिसके साथ डिस्कस कर रहे थे, कॉलेज डायरेक्टर एंड ऑल, सो दे आर लाइक कि यू आर प्रमोटिंग सेक्सुअल एक्टिविटी. मीन्स हेजिटेशंस आर देयर अमंगस्ट वुमेन. वुमन को ही वो मीन्स एक्चुअली वो एक्सेप्ट नहीं करना है. ओपन डिस्कशन हम बात कर रहे हैं, हेजिटेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन मेल पार्टनर्स आर नॉट सेइंग कि वो हमारे साथ डिस्कस मत करो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है या आपके सिम्टम्स क्या होते हैं. हम वो डिस्कस नहीं करते ओपनली, हम वो हाइड करते हैं एक्चुअली. वी डोंट वांट टू डिस्कस आर मीन्स, हम बोलते नहीं है हमारा ये प्राइवेट है तो हम उनके सामने डिस्कस नहीं करेंगे. सो वी शुड हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ. कुल मिलाकर वही बात है कि दैट हमें एट एन इंडिविजुअल लेवल एंड एट घर पे हमें काफी वो ओपन रहना होगा, एंड तब वो जाके वो इट विल बिकम जस्ट लाइक एनी अदर कॉमन टॉपिक और कॉमन, because it's very natural ना menstrual cycle. Everyone knows about कि ये monthly cycle उनका कुछ तो रहता है. So why हमें वो बात करनी चाहिए उनके सामने, हमें वो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है उनके सामने डिस्कस करने चाहिए. So ये हेजिटेंसी कहीं तो भी तो ये दूर हो जाएगी. वही फैमिली के ऊपर अगेन कंप्लीटली डिपेंड करता है हाउ ओपन इट इज एंड हाउ दे आर एक्चुअली ओपनिंग दैट सेफ स्पेस फॉर यू, बिकॉज दैट इज द वही तो पहला स्पेस है जहाँ पे आप ओपनली आप बात करने की कोशिश कर डिस्कस कर सकते हो. एग्जैक्टली. मेरे घर पे जब मैंने बात किया था मेंस्ट्रुएशन के बारे में, व्हेन आई गॉट मैं मम्मी से बात करी तो मुझे लगा कि सिर्फ ये मम्मी से बात करनी चाहिए, पापा को नहीं पता होना चाहिए, और शायद उनको नहीं भी पता होगा. But a very sweet thing which my dad did was he came up to me and obviously मुझे pain वगैरह था, and he was like बेटा ठीक है ना, like कोई बात नहीं, common है, like you're fine, right? And the moment that was very life changing for me, because that moral support is very important actually. Because जिस तरीके से उन्होंने बात करा तो मुझे वो एक समझ आया कि that हाँ ये तो ठीक है, like मैंने इसके बारे में मुझे इतना हिचकिचाहट होने की जरूरत नहीं है. एंड जो कॉन्फिडेंस उन्होंने उस टाइम पे जो मेरे को ऐसा एस्टैब्लिश करा ना, तब से लेके वो अब तक, इवन राइट नाउ उनको मैं बिठा के मैं ट्रू दैट्स ट्रू. I now he knows about menstrual cups.
he knows about period panties, he knows about cloth pads. I tell him everything. He's like, Yes. this are the things, and he feels so happy. He's like, oh, like there are like alternatives which are available for Alternatives environment. are also there, so they can tell you. Yeah, exactly. So So, yeah, like I think again the dialogue starts from home. So the people who are there on the call today, both guys and girls, everybody. I know girls are still like little hesitant about talking about it, but I think they will be boys are open. more No, I yeah, mean the girls will be more open if the males, I think, create that safe space around. actually So don't just true. create a joke of it, like saying कि हाँ ये तो अगर गुस्से में है आज तो इसका मतलब पक्का इसको पीरियड होंगे या नहीं तो she's PMSing today. ठीक है? So The day you're ये going to जब stop those डिस्कशन jokes फैमिली में will be होगा good. ना, सो ये लॉफिंग मैटर जी. नहीं होगा यशस्वी। Right? Exactly. हाँ, सो वो फ्रेंड को भी अंडरस्टैंड करने लगे, क्योंकि वो कैन, Exactly. इफ दे कैन अंडरस्टैंड सिस्टर्स इशू ना, दे कैन Mm-hmm. अंडरस्टैंड फ्रेंड्स इशू। क्योंकि वो उनके घर में ही बात नहीं की जाती तो वो बाहर जाके वो गपशप में कन्वर्ट कर देते थे, तो वो Right. नहीं होगा एक्चुअली। When I had like friends, like he has like बहुत सारे बहनें थे उसकी, but लेकिन फिर भी उसको नहीं पता। तो उसको फिर मैं बिठा के मैं समझाती, लिसन, तुझे कोई नहीं बताएगा ना, तेरे आई डोंट नो योर फ्यूचर वाइफ और गर्लफ्रेंड, whoever is going to come in your life, she'll feel very appreciated if you are aware about it. Even your kid, when you have Exactly. लड़की पैदा हुई हो, वो Yeah. आपको वो openness रखना होगा, तब जाके ये like when you are aware, you are able to empathize with them. So I used to, tell all my, I think all my male friends especially, everybody knows about it, and they are like, कुछ queries होते हैं तो पूछ भी लेते हैं मुझसे. कुछ भी So yeah. Yeah, thank you so much, ma'am. I think we spoke a lot about the vaccinations and cervical cancer awareness. Time ही नहीं पता चला. I think काफी लंबा discussion चल गया हमारा. Actually, I used to speak for 2 hours. Oh my God. Definitely, we'll see, ma'am. Like, if the people who are joined today, if they're more interested in learning, having a dedicated session specifically for the cervical cancer awareness, we'll definitely invite you again. And I just want to, Yashasvi, I just want to share one slide, because the early sure. detection is very, very important. Why we need to do screening actually? There are the 5-year survival rate, means it's a cure, right? In oncology, we can say if any woman or any patient gets survivor for more than 5 years, we can consider it a cure, right? Okay. So if we get diagnosed with a in stage 1, there is 80 to 99% to get clear cervical cancer cure rate जो है, this we can survive for more than 5 years, right? If it get diagnosed in stage 2, there is a chances to 60 to 90%. Stage 3 again is 30 to 50%, and stage 4 it's only 20% chances to get survive for more than 5 years. Because the scope of treatment gets limited, there is a limitation comes for treatment. अगर एडवांस स्टेज में चला जाता है तो सर्जरी में लिमिटेशन आते हैं, ट्रीटमेंट में लिमिटेशन आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्प्रेड है. So why early detection is important? Because 80 to 99% chances of cure rate. Right? This is amazing. Like, I think everybody should please take a note of it. Early detection, I mean, this is going to help you a lot to have an understanding कि कितने जल्दी आप डिटेक्ट करोगे तो फिर आपको उतना हेल्प करेगा. Help करेगा. Okay, ma'am. So, thank you so much for the lovely session, ma'am. Just wanted to check one thing. Okay. Again, you've been, I think, a part of a lot of vaccination drives. And how do you think कि आप किसी CSR projects के साथ भी involved थे in vaccination? किया है हमने जीविका के साथ. So, CSR companies कैसे इसमें एक role play कर सकती है in when specifically it's about promoting vaccinations and promoting the healthcare in general? Actually, affordability and accessibility, because the matter is the cost is right. रिसोर्स लिमिटेड एरियाज के लिए कॉस्ट अफेक्ट करता है. सो CSR पार्टनर्स पे हेल्प दिया होंगे एक्चुअली. दे कैन हेल्प टू एजुकेट पीपल को एजुकेट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं. वो जो भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल नहीं है तो दे कैन प्रोवाइड दैट, मींस व्हाटएवर फंड दे आर रेजिंग फॉर वैक्सीनेशन ड्राइव्स एंड वो, तो हम वो वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं. सो विद जीविका हमने बहुत सारे मींस स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव्स किए हैं.
और राइट, वेरी नाइस। हाँ वो बहुत आप जब सक्सेसफुल है अवेयरनेस और करने एक्सेप्ट जाते हो स्कूल्स में अंडर द CSR प्रोग्राम्स, तो कैसा रिस्पॉन्स रहेगा बच्चों से? रिस्पॉन्स रहता है, अच्छा एक्चुअली रहता है। ओके, रहता है। आई थिंक बहुत सारे छोटे स्टूडेंट, बच्चे ज्यादा जल्दी आई थिंक पिकअप कर पाते हैं and समझते हैं, राइट? हाँ, और अपने एक्चुअली डॉक्टर यति एंड डॉक्टर मोक्षा मैम ने बहुत अच्छे से मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे एक्सप्लेन किया है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि मीन्स कौन से सैनिटरी नैपकिन्स यूज करने चाहिए, या आपके जो भी मेंस्ट्रुअल कप है ये यूज कितना मीन्स रिस्की रह सकता है या नहीं, कैसे किस तरीके से मीन्स यूज करना चाहिए, सब नॉलेज को किसी ने मीन्स वो एक्सप्लेन करना जरूरी है, वो एजुकेट करना जरूरी है, क्योंकि वो गूगल करके कुछ भी सीखने से अच्छा है कि कोई तो भी एक्सपर्ट वो जो भी व्यक्ति है वो उनको पढ़ा रहा है या सिखा रहा है, ये जरूरी है। और ये CSR पार्टनर के साथ अगर ये हम एजुकेट उन्हें कर सकते हैं तो ये बेनिफिशियली रहेगा। राइट, आई थिंक वही एट द एंड ऑफ द डे हम हर कोई लाइक अवेयरनेस के ऊपर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और भले इंडिया वो को मेंस्ट्रुअल सर्वाइकल हाइजीन, कैंसर फ्री अगर बनाना है तो किसी न किसी हेल्प जरूरी है, सो एब्सोल्युटली आई थिंक एंड आल्सो रिसेंटली कुछ न्यूज़ में था ना कि दैट सर्वाइकल कैंसर, आई मीन इंडिया इज द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और आई थिंक एग्जैक्टली वही तो बता रही थी कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज हो गया इंडिया में वो सर्वाइकल कैंसर। राइट। So I think through our session आज जो हमने जितना अवेयरनेस के बारे में बात करा है, completely like menstrual hygiene से लेके हमने cervical cancer awareness तक बात करी। cervical cancer में भी vaccines available है luckily which can protect us with a good efficacy of 98%. So काफी लेवल हम लोग काफी हद तक हम वो अवेयरनेस अभी आज हम पहुंचा पा रहे हैं। आज के कॉल में अराउंड 600+ people have joined. And in fact at one place I think in northern Karnataka also, जो मैंने I think आपको फोटोज मैंने भेजी थी, एक ही क्लास में एक ऑडिटोरियम टाइप रूम में उन्होंने लाइक बहुत सारी बच्चियां आज सुन रही हैं। And I'm very grateful that and very happy that सारी बच्चियां आराम से बैठ के अच्छे से हमारी सेशन सुन रही है। Thank you so much and we're very grateful that you all have joined. So now Abhi, thank you so much for the session, ma'am. I think we have made a very healthy balance of both menstrual hygiene को भी हमने address करा and also cervical cancer के regarding भी हम लोग ने बहुत detail में भी understood. So now moving ahead, अभी हम एक Q&A session, we're opening the Q&A session. So सभी सारे जितने अपने speakers थे, now I'll just take them on screen and we'll quickly run through the questions whatever the audience have for us for each one of you. So our team, हमारी टीम ने क्यूरेट करे सारे क्वेश्चन एंड जो भी आपने सेशन में कवर किया है उसको हमने स्किप कर दिया है। इस सेशन का रिकॉर्डिंग जो है हम प्रोवाइड करने वाले हैं, कीप इट ऑन यूट्यूब एंड देन विल शेयर इट ऑन माय लिंक्डइन पेज। तो मेरा लिंक्डइन पेज भी, लिंक्डइन प्रोफाइल भी आई थिंक माय टीम हैज ऑलरेडी शेयर्ड इन द ग्रुप। यू गाइस कैन कनेक्ट विद मी, वी विल बी पोस्टिंग इट at the earliest, बस थोड़ा सा edit करके आगे पीछे, so we'll put it on live and we'll tag every one of you. So now let's go ahead with the Q&As. Okay, now we have all the speakers on board. Oh nice, it's such a houseful, sorry, it's so amazing to see everybody online today. So I'll just quickly take up the questions. I think we have the first question for for Yati ma'am. ओके यति मैम, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि what steps can be taken to ensure individually like who menstruates have access to okay, just a minute, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिया उन्होंने। हाँ, what role can government play in addressing the period poverty at a national level? Especially when आप schools, education institutions, इसको अगर आप देखते हैं, like if you to consider reaching out through these medium, how do you feel कि government can play a great role in addressing period poverty in our country? तो अभी हम लोगों ने, मैंने मेरे सेशन में भी बताया था कि न्यू पॉलिसी
ड्राफ्ट पॉलिसी अभी पब्लिक डोमेन में रखी है वैसे भी गवर्नमेंट ने, तो उसमें भी आप देखोगे कि इस बार की जो ड्राफ्ट पॉलिसी है उसमें अवेयरनेस का इम्पोर्टेंस बताया गया है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि हर एक स्टेट लेवल पे अलग अलग नाम के अंदर मतलब जो स्कीम चल रही थी अलग, जैसे राजस्थान में उड़ान है, महाराष्ट्र में अस्मिता है, गुजरात में भी है। तो हर एक जगह पे वो स्कीम के अंतर्गत लड़कियों को फ्री पैड मिलता था। ओके। और उसमें जो गवर्नमेंट की चैनल है जैसे कि आशा आंगनवाड़ी प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर्स है वहां से जो एडोलेसेंट गर्ल्स है उनको आइडेंटिफाई करके पैड की फ्री सप्लाई होती थी, या फिर सब्सिडरी रेट पे एकदम माइनर अमाउंट लेके सप्लाई होती थी। लेकिन अगेन एज आई मेंशन कि हमें हर एक एरिया को छूना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एडोलेसेंट गर्ल्स को मिल रहा है, लेकिन जो मिडिल एज वुमन है, पेरीमेनोपॉज में जो भी है वो सारे हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हमें ऐसे नहीं, पूरी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल लाइफ साइकिल है जो वुमन की, तो वो सारे एरिया को हम लोग को मेनार्क से लेके मेनोपॉज तक सबको टारगेट करना चाहिए। और जरूरी है कि हमें अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि कई बार देखा है कि स्कूल में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का चैप्टर आता है तो वो स्किप कर लेते हैं। वेरी ट्रू। तो वो अवेयरनेस जरूरी है। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजें ना भी दो तो एक टाइम चल जाएगा, लेकिन जो राइट इंफॉर्मेशन आप दोगे तो उनके पास चॉइस रहेगी कि उसको कौन से वे में जाना है, ठीक है, क्या लेना है। तो वो एक इंक्लूजन बहुत सारा जरूरी है। और अगर हम लोग आउटर एरिया में देखें तो एक पीरियड फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए हमें एक सैनिटेशन फैसिलिटीज भी जरूरी है। तो वो वहां पे गवर्नमेंट एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है कि टॉयलेट्स और रनिंग वाटर की फैसिलिटीज, सेफ्टी, डस्टबिन, ये जो सारी चीजें प्राइमरी है जो होनी चाहिए पब्लिक स्पेस पे, तो उसके लिए एक वो डायरेक्शन में किया जा सकता है। और सिंस ये मेंस्ट्रुएशन ऐसी है और आप देखोगे पॉलिसी में भी तो बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसी के स्टेक होल्डर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि टॉयलेट फैसिलिटीज वो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय उसमें आ जाता है, पीरियड रिलेटेड जो अवेयरनेस पार्ट है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में आ जाता है, ये जो सप्लाई है वो WCD डिपार्टमेंट। तो मतलब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी है, तो ये इसलिए कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है। तो कुछ एक ऐसा एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को दिया जाए इसके लिए जो सब सारी चीजों को मॉनिटरिंग करे, तो एक मुझे लगता है कि बेटर सॉल्यूशन और बेटर मॉनिटरिंग इसके ऊपर करके हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। That's actually a very good suggestion, ma'am, because I think सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग साइलोज में काम कर रही है, बट अगर आप एक कन्वर्जेंस आप बना सको, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग टूवर्ड्स वन पर्टिकुलर गोल, राइट, कि अगर हम अच्छी प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज बना सके। सो ये सब जब कन्वर्ज करके आप एक ऐसी मॉडल एक नोडल पर्सन को अगर आप रिस्पॉन्सिबल बनाओगे, एक अकाउंटेबल बनाओगे कि दैट these are the things which you have to take care. I think that's a good way to do it. And sanitation facilities, I completely agree. Even like I think we women, if we have to go somewhere out, we are very cautious कि that हमें washroom भी अगर use करना है कहाँ, till the time it's like not clean, we are not comfortable at all. एंड अगेन जैसे स्कूल्स में अगर आप बच्चों को देखोगे कि वो लोग स्कूल के ही लाइक वॉशरूम्स अगर प्रॉपरली अगर नहीं बिल्डअप है तो वो अनकंफर्टेबल रहेंगे ही ऑब्वियसली। एक क्लासेस जाना भी फिर उतना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरा दिन फिर उनको बैठे रहना पड़ेगा, even to change, dispose the pad, or maybe to have a basic hygiene facility. Very rightly addressed, ma'am. थैंक यू सो मच। विल एक्चुअली जो भी आज हम इवेंट में बात कर रहे हैं इन सबका हम एक डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं, वेयर एवरी हु स्पोक कि हर स्पीकर ने क्या क्या चीजें कवर करी, एंड कितने लोग ज्वाइन हुए, कहाँ से ज्वाइन हुए, काइंड ऑफ एंड द डेमोग्राफिक्स ऑफ पीपल हु हैव जॉइंड, आल्सो द काइंड ऑफ Q&As जो हमने रिसीव करा लोगों से, बिकॉज इससे ही फिर जाके आई थिंक it will spark that light for some recommendations or something, maybe some event meaningful discussion ahead. So we never know when we touch the right chord and when the right person is actually hearing us on this call, and then we can have some some good initiatives coming out from this event. So it should just not be that हम लोग every year बस आए कुछ बात की और चले गए, but again
consolidating something out of this and then bringing it into something meaningful action going ahead. So your inputs again with the Q&As and any recommendations that you have even further from this will be very appreciated. And thank you so much for giving those inputs. Thank you so much, Yati ma'am. I think the next question is for Dr. Moksha, I'll just say. So somebody from the students, they have just texted that I've been using a menstrual cup for a while now. So just wanted to know, are there any risks associated with it? So that's a good question. Um, this is something that I've always told all my patients. Okay. He, as I said again, every person is different. Every woman is different. Just Every a minute, woman's Moksha. anatomy is different. Just sorry for just interrupting. Just wanted to translate the question in Hindi also. So basically Sure. question ये है सबका कि I mean somebody from the audience किसी ने ये text करा है कि menstrual cup use कर रहे हैं कुछ time से तो उसके कोई risk है क्या? तो वो risk she just wants to ask from Dr. Moksha. Yeah, Moksha, please go ahead. Okay. So as I was saying, every woman is different. Every woman's anatomy is different. Mostly there are no side effects, but I cannot say कि ऐसा कुछ नहीं होता. There are no side effects. It's completely free to use. And I won't even say कि ऐसे ऐसे complications होते हैं. It varies from person to person. And there are a lot of factors that go into it. कि आप कब कैसे use कर रहे हो? How clean are you keeping it? How frequently are you washing it? You inserting it properly or not? Are you taking out properly or not? Are you sterilizing it after properly or not? Are you frequently changing it or not? How for how long are you keeping the cup in? There are a lot of factors that go into deciding if it is safe for you to not. Most importantly, how old, are you? So, first thing is I tell everybody, not just my patients, everybody, try everything. See what works for you. If you're fine with the cup, go ahead. Please go ahead. Do your research well and good. If you feel any discomfort, if you feel pain, go to a gynecologist, get a checkup. Because right now in this online virtual meet, we can discuss, we can educate ourselves, we can be aware of the situation, but we cannot diagnose any particular condition, right? So as long as you do not have any issues, well and good. If you're having any discomfort whatsoever, आप gynecologist से consult कर सकते हो, you can get a checkup and then you can take it from there. Okay. Thank you so much, Dr. Moksha. So I hope Dr. Moksha has answered your query. So putting it short, menstrual cup जो है वो हर women का body अलग है तो आप trial and error कीजिए आपको क्या सूट होता है क्या नहीं सूट होता है एंड बेसिक चीजें तो यू हैव टू आई थिंक इंश्योर जब menstrual cup when आप जब यूज कर रहे हो तो आपको प्रॉपर्ली उसे स्टेरलाइज करना है आप द काइंड ऑफ फोल्ड आप जो यूज करके आप उसे इंसर्ट कर रहे होंगे कितने टाइम के लिए आप उसे रख रहे हो कितनी फ्रीक्वेंटली आप उसे एम्प्टी कर रहे हो कप को ठीक है देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स सो अगेन आई थिंक एक चीज ये भी है कि साइज डिटर्मिनेशन कुछ लाइक डिफरेंट साइजेस होते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी यू आई थिंक हैव टू आपको वो टाइल एंड एरर करना होगा मुझे भी लाइक फर्स्ट गो में जो मैंने कप यूज किया था वो नहीं सेट हुआ था क्योंकि वो कई रीजन में मुझे लग रहा था कि शायद मैं बड़ा यूज कर रहा था या छोटा कर रहा था एंड देन आई हैड ऑर्डर्ड अनदर वन एंड हर कंपनी का वेरिएंट अलग होता है कभी कभार किसी का स्मॉल वो दूसरे का लार्ज होता है और मीडियम इज समथिंग डिफरेंट सो you have to do the trial and error give your body the time and space to accept things कोई भी चीज आप नई चीज अगर आप कर रहे हो तो ओवरनाइट नहीं होता है आपको आराम से उसे आपको खुद को एजुकेट करना होगा वीडियोस देखिए आप यूट्यूब में अभी आज के डेट में जो कंटेंट अवेलेबल है जो अवेयरनेस अवेलेबल है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा लाइक जिस आई थिंक जब मैंने और मोक्ष ने शायद जब हमने यूज करना चालू किया था उस टाइम पे तो इतना कुछ अवेयरनेस नहीं था आई थिंक सिर्फ फॉरेनर्स के कुछ वीडियोस थे जो लोग प्रॉपरली वो बात करते थे और डिफरेंट कप्स एंड डिफरेंट फोल्ड साइजेस क्या होते हैं डिफरेंट फोल्ड्स क्या होते हैं बट अभी तो काफी मैंने अवेयरनेस है तो अपने आप को आप एजुकेट कीजिए समझिए एंड कुछ भी चीज आप आप अगर बॉडी में अगर आप डाल रहे हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटेन दैट हाइजीन लेवल सो आप हाइजीनिक
रखना is like the most important thing. Okay. Thank you, Dr. Moksha, for addressing it. Now let's next just move to Dr. Jyoti ma'am. So, okay, ma'am, you have a question that can HPV vaccines be provided for free or subsidized rates somewhere? Like government का ऐसा कोई scheme है जहाँ पे फ्री में या subsidized rates में HPV vaccines को दिया जा देते हैं क्या? गवर्नमेंट तो नहीं प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो जीआर निकला है कि वो दे आर प्लानिंग टू प्रोवाइड दैट, बट एज ग्रुप जो भी है वो 9 to 14 years ऑफ एज ग्रुप कवर करेंगे. अच्छा, बिकॉज ओके, पॉपुलेशन इज जो भी Right, सिलेक्टेड right. पॉपुलेशन इट्स टू हाई, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट आल्सो कि वो इतने सारे लोगों को सब्सिडाइड रेट में दे या फ्री ऑफ Right. कॉस्ट दे, राइट. सो जो भी सीएसआर पार्टनरशिप जो भी हमारे लिए ये फंड रेज करते वगैरह, तो वो अवेलेबल करते हैं, तो हम फ्री ऑफ Okay. कॉस्ट वो लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमें कोई किसी से कहीं से फंड रेज मिल रहा है तो कोई स्पॉन्सर कर Then सकता है, then you can administer the vaccine. you obviously. exactly But you again, can when it administer comes to governments, there are no free No, vaccines not as yet, of not now. yet. Not yet. Yeah. But I think इस And बार that's why कि गवर्नमेंट चार्ट में वो एचपी वैक्सीनेशन का जो भी है ना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में उन्होंने Right. इन्वॉल्व ही नहीं किया है एक्चुअली. Right, दे आर right. प्रोवाइडिंग ओनली 11 वैक्सीन्स गवर्नमेंट, Right. बट देयर आर इन एक्चुअल देयर आर 20 वैक्सीन्स. Oh, okay. Which are supposed 20 to be वैक्सीन जो भी administered. हाँ प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो भी वैक्सीनेशन शेड्यूल यूज करते हैं या प्रोवाइड कर वैक्सीनेशन देते हैं उसमें 20 वैक्सीन्स है. सो ये Okay. गवर्नमेंट पूरे प्रोवाइड नहीं करता है बिकॉज ऑफ कॉस्ट. ओके ओके. तो जो गैप है वो हम वेरियस चीजों के थ्रू इधर सीएसआर के कोलैबोरेशंस और स्पॉन्सरशिप्स और एनी अदर वे वेर इधर फिलैंथ्रोपिस्ट और somebody can और अभी ये support. स्पॉन्सर करना इजी भी हुआ है बिकॉज कि अब इंडिया में भी ये वैक्सीन अवेलेबल हुआ है. जो पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने भी ये वैक्सीन ये किया है. और पहले जो वैक्सीन था वो गार्डासिल का था. अच्छा, ओके. हाँ ओके ओके. मैंने एक्चुअली गार्डासिल लिया था. गार्डासिल. बट आई थिंक और ये फॉरेन में भी वही है. गार्डासिल ही अब तक जो भी है वो 10 to 12 ईयर से इंडिया में भी अवेलेबल है गार्डासिल. लेकिन Okay, कॉस्ट okay. जो है उसके वेरिएंट के Yeah, ऊपर है. yeah. अगर हम काफी एचपीवी के experience है. 4 वेरिएंट्स अगर कवर करना चाहते हैं तो उसे क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन बोलते हैं गार्डासिल 4. और अगर Okay. 9 वैलेंट कवर करना है तो उसे गार्डासिल 9 है. सो कॉस्ट इज Okay, डिफरेंट. फॉर क्वाड्रीवैलेंट इट्स नियर अबाउट 4,000 एंड फॉर 9 वैलेंट इट्स गोज अराउंड 10,000. सो Per इट्स dose. नॉट अफोर्डिंग फॉर एवरीवन एक्चुअली. Per dose, right? Yeah, per dose. That's why so But any day, I think affordability and prevention is accessibility better than comes cure, in front. so we should focus on having as much Actually, preventive thing as exactly, possible. exactly. Great, great. So here CSR partner will help definitely. Got it, got it. Yeah, okay. Thank you so much, Jyoti ma'am. So now we've taken all the Q&As. Thank you so much for all the thoughtful questions and the active participations from the people. And I'm so happy that, people are like, right now the number is 489, like abhi tak 500 tha, like 600 we even went over 600. And again, a few places bas ek hi jagah pe bada sa screen laga ke rakha hai, and the children have joined. It's such a truly overwhelming response. So I think 700-800 to humne easily reach kiye hai, and I hope everybody has picked out something or the other from the whole discussion what we had. I would like to thank each and every one of the speakers who has taken out their valuable time and discussed on such crucial things today. We needed, that such passionate and dynamic women who can put in that same passion, whatever they have for promoting whatever causes they know till now to people. Thank you so much, Yati ma'am, Dr. Moksha and Dr. Jyoti ma'am. आप लोगों ने बहुत अच्छे से सारे ही questions जो भी हम लोग आज के दिन discuss करना चाहते थे, both with respect to menstrual hygiene and also cervical cancer, बहुत like in detail, and again along with the Q&As we have covered it, which is really wonderful. Thank you so much. And now for the people who have joined in, see, let us continue this discussion beyond today. It's just not a one-day activity or a two-day activity. कि आज के दिन हमने कुछ hashtag डाल दिया, post कर लिया, हो गया. नहीं. आप आज जो आप सुन रहे हो, आप इसको आप आगे लेके जाइएगा.
and have a discussion. And हम लोग हमेशा ही reachable है, ठीक है? तो just reach out to us for any queries. आपको कुछ भी अगर जानना है, we are there. We will share this recording. We will be sharing the presentation also, which Dr. Jyoti ma'am had, so that in something like a ready reference if they want, and if they want to go through it, I can understand. आप देख सकते हो. And again, this year's theme of Together for a Period Friendly World, let us stick to it. Let us, at our individual levels, create that safe space for, for women or for each other, women as each other, एक दूसरे के लिए, women के लिए हम रहे, and also like men, you are like the head of the families. If you see, like, you can create a very good environment altogether for the women. So I hope you don't forget all the learnings, whatever you've picked up today, and spread that in your individual communities and speak about it. Thank you so much again for joining us, and stay engaged, stay informed, and stay safe. Have a wonderful day, guys.